Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a good morning to everyone. Honorable Parliamentary Secretary, worthy panelists, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to welcome you all to the Institute today on this important seminar. Kashmir is an issue which has remained unsettled for over 7 decades now. The situation is complex, it is tense, and people living in Kashmir are living under the shadow of fear and fire. The once beautiful valley has been turned into an open prison, where human rights of people are trampled with impunity by the Indian security forces and paramilitary forces. The unilateral action of the BJP government 2 years ago further imparted complications into the Kashmir issue. With the abrogation of Article 35A and 370, things have become further complicated. Over 4 million domiciles have been issued, as per reports by the Indian authorities. And if this trend is continued, it will eventually change the demographic balance of the valley. Indians now can purchase property, and you can understand that if they are allowed to do so, it changes the demographic balance. The BJP government's mindset is known to all now. The Hindutva ideology, which they profess and propagate, has not only made living in India difficult for the Muslims, but for all other minorities. The world watches as Kashmir bleeds. Figures which are available from international sources cite more than 100,000 people who have been martyred and killed in Indian occupied Kashmir. Over 12,000 women have been raped. There have been umpteen thousands of injuries to young people with pellet guns. Kashmir bleeds and the world watches. And what do the Kashmiris want? They want a plebiscite, which was promised to them by the UN Security Council resolutions. But despite this reign of terror, which has been unleashed on the Kashmiri people by the Indian security forces, they still continue to resist. They want their freedom. They want their plebiscite. Pakistan has and will always support the people of Kashmir. It stands by them in their hour of need. Today, we have a very worthy panel, and they will be sharing with you their views and thoughts on the situation in Kashmir. Thank you very much. Thank you, Ambassador Nadeem Riaz. I would now request Ms. Andali Abbas, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs, to grace the stage with her presence for the inaugural address. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, IRS, for inviting me on this very important topic, Kashmir under the shadow of fear and fire. जब मैं ये मौजू देख रही थी, तो मैंने कहा कि Kashmir is not under the shadow of fear and fire, it is already burning. And we as a world, as human beings, are witnessing this burning shamelessly. And that is why whatever we do for Kashmir is not enough. My worthy panelists, my worthy guests, by committing this 2 hours over here, it's a contribution, but much more needs to be done. We as government, we as people of this country, and we as people of this world, citizens of this world,
are at a test. हमारी आजमाइश है ये कि हम अपने सामने ये सब कुछ होता देखें और हम पूरी कोशिश ना करें. So let me tell you that we in the world need to understand one thing. और ये वो वक्त है जब मुझे लगता है कि शायद दुनिया को थोड़ा सा एहसास ज्यादा हो जाए. Why? Kashmir is an open prison. Kashmir has been in a lockdown for 600 plus 700 days and running and continuing. Imagine करें what is happening in Melbourne and America and France and everywhere around the world. एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाते हैं, एक हफ्ते का, सब बाहर आ जाते हैं, दुकानों को बंद करना शुरू कर देते हैं, because they refuse to be locked down for even 1 week. And I'm talking about all these countries which are educated, which have all the resources, which have all the means to live for weeks without help. But look at Kashmir. Look at the level of resources, accessibility. I mean, people live on the mobile when they're in lockdown. And Kashmir, there is a communication breakdown. So at the moment, our question to the world, and as a government and as a prime minister, we are constantly pushing this as a top cause in the world. And it has made some sense after 74 years. That is why I feel that every little drop counts. Because the world has gone blind and the world has become mindless and heartless and soulless. That is why I said that what is happening in Kashmir, you're talking about a lockdown on human beings. I'm talking about a lockdown on animals. आप देखिए क्या हुआ लॉकडाउन में, जब जानवर बाहर आए हैं और ह्यूमंस अंदर चले गए हैं. You've seen the cloud and the sky clearing up. You've seen animals prospering. जानवर भी अंदर जब रहता है तो ना वो प्रोडक्टिव होता है, ना वो खुश होता है. आप घरों में देखते होंगे, you know, after a while the dogs are let out of the den because they cannot be locked down for long. And we keep on fighting about human rights and animal rights. But in comparison to that, what are we doing for the rights of Kashmiris? So the question is, if 100,000 people have been killed, which is just reported, must be many 100,000. My question is that yes, when a few hundred people were killed, a nation undertook a war against another nation, and that war continued for 20 years, killing millions because their citizens were hurt. Well, what about this ongoing murder, continuous murder going on? My question is that if 26,000 women are being gang raped, how would the world feel if right in their house somebody just did it in front of their eyes? My question is that if a 6-month-old, beautiful, cute child loses his eyes to pellet guns, and that child happened to be your son or daughter, how would you feel? And I love that quote, and I quote it again and again, by a blind child who's been blinded by the pellet gun. And he questions that I have become blind due to a pellet by an Indian armed bullet. But why has the world gone blind that they cannot see that I'm blind? So that is the question we need to ask ourselves all the time. Because this is a case which may be 70 years or whatever old, but it's a case which is constantly testing us, like I said, as individuals.
There are, like the ambassador mentioned, demographical encroachments being made. There are constitutional encroachments being made. There are violations being made. The latest, as you might have read in the Guardian article, is the legal jihad. There's a whole movement in India on the legal jihad. And that is that if some intermarriages are taking place between interfaiths, then the whole family and the whole community is targeted, and they label it that they're getting married for a legal jihad, while they themselves are encroaching and getting married in Kashmir to make a majority of their own religion. They're doing the opposite over there. And then they are mob lynching and they're killing. And it's a daylight murder. So Dr. Gregory Stanton, who's the head of Genocide Watch, the organization international which does a watch on genocide in the world, Dr. Gregory Stanton, and I've written an article on this on Monday, states that genocide is in the process in India, in Assam and in Kashmir. And Dr. Gregory Stanton is nobody concerned with us or a Muslim or a biased guy. He's the best authority in the world जो कि बताता है कि genocide हो रहा है. और ये वही author हैं, वही think tank के head हैं जिन्होंने रवांडा में ये predict किया था. 1994 रवांडा में उन्होंने exactly ये कहा था. उन्होंने कहा था रवांडा में genocide होगा. Nobody listened. 1999, 800,000 Tutsis and Rwandans were massacred, and the world couldn't do anything. And that's a repeat going on. So, number one, as a government, we have made Kashmir a top priority, and our spokesperson will be talking about it more from the government's point of view. But I think the Prime Minister's Kashmir cause and Islamophobia cause, which was laughed at and mocked by many in the country and by many internationally, that nobody's going to pay any attention, has resonated. For the first time in the history, President Putin and Prime Minister Trudeau has recognized and said it is illegal. In fact, the Canadian Prime Minister has actually appointed a special representative to fight Islamophobia, which is what the Prime Minister has said. For the first time, the Prime Minister's voice that Modi is Hitler repeat. RSS is Hitler inspired. And for the first time, Prime Minister's cause that Kashmir is not just a Pakistan-India feud, it is a world in danger feud, because in trying to appease Hitler, World War II took place. And in trying to appease Modi, now the whole world is going to be at war. So it has picked up, it has resonated. The second thing very important, and I think he will be talking about more about the UN Charter and resolution, so I leave it to him to describe that, what we have been doing. But in my humble opinion, that my third suggestion would be that US citizens, US stakeholders should pick up the cause, because now there's an international authority which has said that Rwanda is going to be repeated. So we need to have the most powerful, as we know, what happened with how did Modi cover down to 1 year of the farmer protest? Because the social media and the international community made a hashtag. And that hashtag put pressure. So Kashmiri lives matter, it's a hashtag. And similarly, we need to say, stop genocide in Rwanda. Each one of you, if you start this movement with a hashtag, each one of you, if you say that Rwanda repeat in Kashmir, Rwanda is going to be repeated in Kashmir, stop this genocide, it will catch a momentum, maybe not in 6 months, maybe in a year. So each one of what I'm saying is at the government level,
at a country level, at an individual level, as citizens of this world, we need to raise a voice. Raising a voice is the most effective. Yeah, we'll fight a legal battle in UN, but you know how things are. Yeah, we will fight at the government level, but the most powerful voice is the voice which is unstoppable, which is the voice of the citizens of this world. And that's what we need to do. We need to develop that. So, like I said, and I keep on repeating that, societies decay not because of the violence of bad people, as Dr. Martin Luther said, but because of the silence of good people. So we need to raise this voice at every level. And when the voice becomes a chant, and the chant becomes a slogan, and the slogan becomes a mantra, and the mantra becomes the conscious of the world, things change. Thank you very much. Thank you, Ms. Indaleeb Abbas, for again instilling this realization within us that we as a country, as citizens, and as all the stakeholders involved should be doing something for the people of Kashmir, should raise their voices for the people of Kashmir. Next on the panel, we have Ambassador Iftikhar Asim, a spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, to give a statement on the subject matter. Thank you very much. Assalamu alaikum. President of IRS, Ambassador Nadeem Riaz, Madam Indaleeb Abbas, Parliamentary Secretary, Madam Farzana Yaqoob, and distinguished Madam Shamim Shawl. Ladies and gentlemen, I think as the President of IRS and Madam Abbas said, we are gathered here to express solidarity with the people of Kashmir who are waging a just struggle for their right to self-determination. And the important thing to note is that this is not a one-off event. This struggle has been ongoing for over 7 decades. And this is a struggle which is legitimized and sanctioned in the favor of the Kashmiri people by the United Nations, the relevant resolutions of the UN Security Council, and all of that was agreed by the governments of India and Pakistan, particularly at that point of time. And the problem is that that right, the Kashmiri people have yet not been allowed to exercise. And that is the root of the problem. Now, many figures have already been quoted by Ambassador Riaz and Madam, and I don't want to go into that. You have a lot of information that is available through official sources, through Kashmir media sources, through UN sources, through international human rights and humanitarian organizations, the Human Rights Council, the UN Secretary General's reports, and other independent sources which clearly depict the state of human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And there is this ongoing increase in repression and oppression over the last 7 decades. We know what has been happening over the last 7 decades, but what has actually escalated this abysmal track record of India in Kashmir is the illegal and unilateral actions that India took on 5th August and the subsequent actions. The core objective of which, as was also mentioned, is
to bring about a demographic change in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And that will directly impact on a plebiscite if it were to be held under the auspices of the United Nations. So these are very serious challenges. The scale of human rights violations, the violations of international humanitarian law, the way war crimes, crimes against humanity, and acts that amount to genocide, they are being documented. I think that is encouraging. But as Madam also said, we need to do more. We need to create awareness among the international community and all those who matter, all those who can and must play their role in bringing an end to the human rights violations in IIOJK and to help us, to help the Kashmiris move towards a resolution of this dispute in accordance with the UN resolutions and above all in accordance with the wishes of the Kashmiri people. I think we are gathered here to express solidarity. It's an ongoing process. I recall we were here on 27th October also for the Black Day. And this support, which is there and which is very essential, to which the people in IIOJK are looking up to every day, is very essential and primordial to keep this struggle for self-determination going and going strong. I think we are fortunate that this is one issue on which we have national consensus, complete unanimity among all sections of society that this is a core national interest of Pakistan. And this has been reaffirmed. If you have a look at the public document of the national security policy, this has been clearly reaffirmed. This is the topmost core national security interest of Pakistan. So I would say that at the governmental level, we are very determined to continue our all-out support. And I say all-out support. Yeah, some people object to the terminology diplomatic, political, and moral support. I think this is all-out support, which the government of Pakistan and the people of Pakistan have pledged to the people in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I would like to highlight, I think, three key aspects of the Jammu and Kashmir dispute. And this is important to understand the context. First is the legal and political dimension. And many people, when they analyze, sometimes there is criticism that Pakistan has lost its position. Our position has been weakened. That is not the case, because our position on Jammu and Kashmir is anchored, is linked to the UN position on Jammu and Kashmir. It is India's position that has withdrawn from its initial pledge and commitment to the UN Security Council resolutions. We are firmly anchored, and we firmly believe that the solution lies through the implementation of UN Security Council resolutions. And the UN Security Council resolutions are relevant, they are valid as they were in the 40s and 50s. I think that is a fundamental question to remember and highlight. It is very clear that a final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people, expressed through a democratic method of a free and impartial plebiscite held under the auspices of the United Nations. I think nothing can be clearer than that. So any steps that India has taken over 7 decades or is continuing to take since 5th August, they are null and void.
They have no legal basis under international law. The international legitimacy is not accorded to those steps. And Pakistan's position that we continue to support a solution in accordance with the UN Security Council resolutions firm, stands firm on a high moral legal ground. I think this is the main difference in our approach vis-a-vis India's approach on the question of Jammu and Kashmir. And I think it is important, always important, to recall what the United Nations, what the UN Secretary General himself has said on this issue. So you would remember that on 5th August 2019, India takes these illegal and unilateral actions. On 8th August 2019, there was a statement by UN Secretary General Mr. Guterres, which clearly mentioned and reaffirmed that UN's position on this issue remains the same. It is guided by the UN Charter and the relevant UN Security Council resolutions. He expressed serious concern on the human rights situation in Kashmir. And most importantly, he urged the sides to refrain from taking any steps that would change the status quo. I think this was a key statement by the UN Secretary General at that time, which completely 100% was in line with what is Pakistan's position on Jammu and Kashmir. And it completely contradicted what India has been telling the international community, that Kashmir is an integral part, etc., and that the UN Security Council have no role and the resolutions are no more relevant. So you have seen on 3 occasions since 2019, the issue of Kashmir has been discussed in the UN Security Council. That has further validated Pakistan's position. You saw very recently in the start of the year, in his interaction, the UN Secretary General again reaffirmed the same position on Kashmir. The President of UN General Assembly on visit to Pakistan reaffirmed the same position of the UN on Jammu and Kashmir. So I think sometimes people also compare that, for example, on Palestine, there is a lot of support in the UN. There are many, many resolutions, and there are many discussions in different fora. But I think the most important thing to remember is this unfortunate reality that although that support for Palestine is there, you've seen that since 40s, and I think both Palestine and Kashmir issues originated almost at the same time. You've seen how, unfortunately, the Palestinians have lost ground, how the resolutions on some occasions have been weakened. Our position remains firm. The Security Council resolutions are intact, and I think that provides a strong legal foundation to Pakistan's position. I think it is our responsibility to continue to ensure that remains in place. Second, I think, and that is a very important dimension, is the human rights and the humanitarian situation. As Madam mentioned, lockdown, and with COVID, there was a double lockdown and the communications blackout, and on top of that, 900,000 troops, a ratio of 1 to 9 with the Kashmiri population, which has been besieged. I think this is unimaginable. And the kind of atrocities that have been committed, they're also unspeakable. So I think, as we know in the world of today, human rights is an important subject. You can draw attention of the international community, you can draw attention of the international media on the basis of human rights. And I think this is what we have been able to do successfully. You've seen, and Pakistan has been raising this aspect for many, many years.
but it's encouraging now that it has been picked up by the international community, by the UN. There were two strong reports by the Office of the High Commissioner for Human Rights in 2018 and 2019, and the international human rights organizations, Madam mentioned some of the hashtags. There was a very famous hashtag by Amnesty International, "Let Kashmir Speak." So these are, I think, the kind of movements that are there, that are very visible, and which, in my view, we need to continue and sustain. The human rights dimension is very, very important. That's why we are focusing on it in the UN, in the General Assembly, in the Third Committee, in the Human Rights Council. You have seen how, apart from the Office of the High Commissioner, the special rapporteurs and procedures of the Human Rights Council, they have been activated, and they have addressed several joint communications to the Government of India, which India has not responded, which shows that they have something to hide. And this process is continuing. We have mobilized very effectively the Organization of Islamic Conference, and the upcoming ministerial session of OIC in March in Islamabad is going to be an important occasion, which will again renew and reaffirm its support for the Kashmiri right to self-determination. I think on the question of human rights and lawfare, there are significant developments that are taking place. You must have followed the Russell Tribunal on Kashmir that was held in Bosnia recently. You would have followed the legal case that has been filed in London by Stokes White against Indian government officials for human rights violations. And I think what might have prompted also is the seminal work that was done by Pakistan. You remember that in September last year, we produced and presented before the world a comprehensive dossier on Indian human rights violations in IIOJK. And if you look at the report of Stokes and White, it also documents over 2,000 cases of human rights violations and war crimes in IIOJK. So these are important, significant steps. I think the civil society in Pakistan, the think tanks and others can contribute by providing further momentum to these steps that are being taken. Lastly, the third dimension is the peace and security dimension of Jammu and Kashmir dispute. This is very obvious. This has been obvious to the international community for over 7 decades. And we have been constantly highlighting this to the international community. The Prime Minister and the Foreign Minister have been periodically interacting and writing with the Secretary General, the UN Security Council, to update them on the security, on the peace and security dimension and the human rights dimension in Kashmir, and we continue to do that. I think one aspect to which Madam also referred to is how the overall situation in India itself, the Hindutva-driven Nazi-inspired policies of BJP, RSS combined, how they are being viewed by the international community. I think that is important. And I think that is something to which also we can take credit, because this was Pakistan that initiated this discussion. This was Pakistan, this was especially the Prime Minister who drew the attention of the international community to the fascist policies of India
which were having a direct impact on not only the Muslim minorities inside India, but the people of Jammu and Kashmir. So I think this is something that has been taken note of by the international community. You've seen that there are discussions in world parliaments, EU, US, UK, and others. You've seen statements by international leaders, and now you've seen, such significant statements by people like Gregory Stanton, President of Human Rights Watch, alarming and drawing attention of the international community to the risk of possible genocide in India and Kashmir. So I think these are important aspects that we need to keep in mind. One thing that needs to be pointed out, that despite its oppression and in IIOJK and its policy of representing this situation as a situation of normalcy, because it tries to cover up its human rights violations in IIOJK. I think the situation is very evident now and increasingly evident before the international community. But what one result of this approach of India inside IIOJK is the increased alienation, I would say total alienation of the people of Kashmir towards this Indian occupation. I think this can be a game changer. Even those who were supposed to be and considered as the puppets of Delhi, they have spoken out against these policies. So I think this has further galvanized the opinion within the Kashmiris and provides further momentum to their legitimate struggle for self-determination and freedom from Indian occupation. One question is asked from us, from the government. So what is our overall approach in this context vis-a-vis the relations with India? And I think on that, it has been said on a number of occasions. The Prime Minister himself, the Foreign Minister have made it clear. And there was a very strong, clear desire on part of the Prime Minister at the beginning. And he said that if India takes one step, you recall, we would take two. But by the actions that India took in August 2019 and the subsequent events, they have completely vitiated the environment. And I think at the moment, the conditions conducive for a constructive dialogue with India are not there. So this is what the Prime Minister has said clearly, that the onus lies with India to take steps to reverse illegal actions and to create an environment that will be conducive for result-oriented dialogue between the two countries. Lastly, I think this is the most important point in my opinion, and I have heard this in recent months directly from our Kashmiri brothers and sisters. I think there is increasing frustration. We recognize that there is increasing expectation that more needs to be done. There is reiteration of the continuation of the Kashmiri struggle. But at the same time, I think our Kashmiri brothers and sisters are looking up for enhanced support, from continued strong support
from Pakistan and the rest of the international community to bring an end to the human rights violations, to improve the situation in Kashmir and eventually take them towards their ultimate goal of self-determination. I think we need to recognize that it is our Kashmiri brothers and sisters who are suffering the pain, the agony, the oppression, the atrocities on ground. And while we gather here, I think the entire nation is going to rise and stand in support of our Kashmiri brothers and sisters, to let them know that they are not alone, that the entire Pakistani nation is with them. And not only in Pakistan, but all across the world, this demonstration of solidarity with the Kashmiri brothers and sisters, it remains strong, and it will be very clearly demonstrated on 5th August. And we will take this struggle and support forward. Thank you so much. Thank you, Ambassador Iftikhar Asim, for enlightening the audience in regards to what is the international stance on the Kashmir issue. But again, the international community need to launch some actionable plan for the people of Kashmir. In the meantime, I would like to welcome Mr. Shahryar Khan Afridi on behalf of Institute of Regional Studies. Our next panelist is Ms. Farzana Yaqub, who is the former Minister of Azad Jammu and Kashmir. I would like to request your presence on the stage to shed some light on the sub-theme Life Under Curfew in Indian allegedly occupied Jammu and Kashmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है. मुझसे पहले जो स्पीकर्स हैं वो हमें बता चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी क्या पोजीशन रही है और किस तरह से उसने कश्मीर के लोगों की वकालत की है. मैं यहाँ पर कश्मीर के मामलात और हालात के बारे में बात करूँगी. सिर्फ जनवरी में 27 लोग कत्ल हुए हैं, 25 लोग अरेस्ट हुए हैं, 19 लोग जख्मी हुए हैं, 12 गन फाइट्स हुई हैं, 14 दफ़ा इंटरनेट बंद किया गया है, 13 घर मिसमार किए गए हैं. ये हर महीने की रिपोर्ट जो है वो हमारे कश्मीरी एक्टिविस्ट्स बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वो शेयर करते हैं. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो हमारी इस तरह की रीसेंट अब्यूज़ेस जो अब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारे कश्मीरी लोग, उस पर बाखबर रहिए. जब आप बाखबर होते हैं तो ये खबर आगे पहुंच सकती है, लेकिन अगर खबर आप तक ही ना पहुंची तो हमारी ये मेहनत ज़ाया हो जाती है. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हुए लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान की फ़ौज उनका पीछा कर रही है, उनका मुहासरा कर रही है, उनको कत्ल करने की मुकम्मल तैयारी करके बैठी हुई है, वो बहुत मुश्किल काम कर रही है. उनकी उम्मीद, उनकी तवज्जो और नज़र इस तरफ है कि वो जो काम कर रहे हैं उसका फिर आगे क्या हो रहा है, उस पर कौन बात कर रहा है और उनकी आवाज कौन बन रहा है. और हम ये महसूस करते हैं कि इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है. चाहे जितना भी काम किया जाए, चाहे जितनी भी बात की जाए कश्मीरियों के बारे में, वो हमेशा कम है. फ़लस्तीन के बारे में एक मशहूर ज़माना आर्टिस्ट हैं एमा वाटसन, उन्होंने एक ट्वीट किया तो वो दुनिया की हाईलाइट बन गया. बिलअमूम फ़लस्तीन के बारे में चाहे वो अदाकार हों, फनकार हों, बिजनेस के लोग हों, वो बात करते हुए डरते नहीं हैं, ना ही वो कतराते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि फ़लस्तीनी अपने हक की जंग लड़ रहे हैं. इसराइल उन पर जुल्म कर रहा है.
फलस्तीनी अपनी ज़मीन मांग रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस महफूज रखना चाहते हैं, ये है उनकी जंग, और दुनिया उनका साथ दे रही है। तो वो क्या कमी है कश्मीरियों में कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए? वो क्या मामलात हैं कि हम कट भी रहे हैं, मर भी रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं कि जेनोसाइड होगी, हम 70 सालों से कह रहे हैं जेनोसाइड हो रही है। देखिए पॉपुलेशन काउंट, मुसलमान 1947 में कितने थे और आज कितने हैं? जेनोसाइड तो हो रही है। Oh, why are we waiting for an American to tell us that there is going to be a genocide? There is no future. There is no tomorrow in Kashmir. There is only yesterday and today. That's a dilemma of Kashmir. There can be no plans, nothing. क्योंकि कल का क्या, आज का भी हमें नहीं पता कि कितने मरेंगे। अभी रिसेंटली इनकाउंटर में हमारे कुछ नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है, और ये तो रोज का उनका निजाम है। उनका जब दिल चाहता है वो उठते हैं, फैसले उन्होंने पहले से किए होते हैं कि इस इलाके में जाकर हमने इतने नौजवानों को कत्ल करना है, और उनके जो हुकाम हैं वो खुद कहते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो 500 से कम हैं। तो ऐसी कौन से असलहे हैं हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स के पास, हमारे उन बहादुर नौजवानों के पास जो कि हक की जंग लड़ रहे हैं, कि जिनको 9 लाख फौज भी नहीं पकड़ पा रही? ऐसा क्या मामला है कि दुनिया ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि कश्मीर हालत जंग में है, और जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो वॉर क्राइम्स हैं। ऐसे में जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं या कुछ मामला आगे बढ़ा है, उसको यकीनन सराहना चाहिए। और उसमें जैसे कि पहले जिक्र किया गया कि जो एक केस फाइल किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि वो आजाद जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, एक नौजवान बच्चा 15 साल का, जो कि गलती से LOC क्रॉस कर गया था, हिंदुस्तान की फौज ने उसको इंडियन ऑक्यूपाइड जेल्स में रखा, और फिर तकरीबन 15 साल के बाद उसको निकाल के उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी फैमिली आजाद जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए वो केस हम लोग वहां पर स्टोक फाइट में फाइल किया जा सका, मैनचेस्टर वॉर क्राइम यूनिट में। उन्होंने उस फाइल को, उस केस को सिर्फ लिया नहीं है, उसको एक्सेप्ट किया है। उस पर इन्वेस्टिगेटर जो है उसको भी वो फाइल, वो केस दे दिया गया है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से कोई ये काम करेगा, तो नहीं, ये बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो कोई 2-4 उसके फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भी अल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा। 2016 में एक बहुत ही कीमती किताब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के सिविल एक्टिविस्ट्स ने बनाई थी, जो कि आज हिंदुस्तान की जेल में है, खुर्रम परवेज, और उनके उस्ताद परवेज इमरोज, जिनको राफ्ट ऑफ पीस अवार्ड मिला हुआ है, परवीना आहंगर को भी ये अवार्ड मिला हुआ है। ये 2 बहुत अहम, मशहूर, मजबूत और बहादुर कश्मीरी हैं कि जिनका काम सारी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। स्ट्रक्चर्स ऑफ वायलेंस के नाम से एक किताब बनाई गई थी, जिसके अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट द इंडियन आर्मी का पूरा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वो रिपोर्ट हुकूमत वक्त को दी गई है, वो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन को दी गई, वो रिपोर्ट यूरोपियन पार्लियामेंट में दी गई है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के फैक्ट्स और किताबें ऑनलाइन हैं। कश्मीरी जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम ऐसे थिंक टैंक्स जो जहाँ पर जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स कश्मीरी शेयर कर रहे हैं, उस पर आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आप लोगों का बिल वास्ता और बिला वास्ता स्टूडेंट्स के साथ काम होता है, उस पर प्लीज रिसर्च करवाइए।
کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا نئی سولوشنز ہو سکتی ہیں, کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ایسے میں آئی مسٹ recognize and appreciate the work done by Kashmir committee, کیونکہ شہریار صاحب has been very active on this, اور لیگل فورم آف کشمیر جو ہے ناصر قادری ہیں, ان کے ساتھ ملنا, ان نوجوانوں کشمیری نوجوانوں کو ہمت دلانا, انگیجمنٹ, سینس آف اونرشپ دینا, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. کام کشمیری کر لیں گے, کام کشمیری کر لیں گے, آپ لوگ بے فکر رہیے, بٹ ٹو اون, ٹو ٹرسٹ and to let them do the actions that are required, that is extremely important. So I must say آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے مشکل حالات میں لوگوں کو گیلونائزڈ رکھا ہے, پر امید رکھا ہے. لیکن ہم یہاں پر رک نہیں سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ اگلے 70 سال بھی ہم 5 فروری پر گفتگو کریں. ہماری خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ ریزالو ہو. اینڈ سو آئی وڈ ریکویسٹ دا تھنک ٹینکس ٹو پلیز read and ask the students to do research on the Kashmir agreement, which decides the relationship between the government of AJK and Pakistan. To read the bilateral agreements between India and Pakistan, and to realize and recognize کہ جو انڈیا کا ریٹرک ہے کہ جو bilateral agreements ہیں ان کی وجہ سے کشمیر is a bilateral issue is very wrong. No, it is a UN recognized occupied territory. It is not a bilateral issue. It is an internationally recognized problem that must be solved by the intervention of United Nations. انڈیا اور پاکستان اس کو ہندوستان کبھی بھی حل نہیں ہونے دے گا. اس میں ہمیں اور نوجوانوں کی ضرورت ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آپ کو فیکٹس دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ امید رکھنا کہ وہاں سے بات بھی کی جائے گی, ایک تو وہاں پر لوگ لڑیں اور اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کریں, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں ذمہ داری حکومت وقت آزاد ریاست کی بھی ہے, انہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا. No one is stopping us, the government of AJK, to move forward and to progress and to implement solutions that have never been used before. اور وہاں پر conversation ہو رہی ہے. میں امید رکھتی ہوں کہ اب جو حکومت ہے آزاد کشمیر میں وہ اس کو آگے لے کر بڑھے گی. حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر مل کر اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر جا سکتے ہیں. اور آخر میں بالعموم یہ امپریشن ہے کہ جی آزاد کشمیر کی حکومت کیا کرتی ہے, اور مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب بھی چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں بات ہو رہی ہے, OIC میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ میں بات ہو رہی ہے, تو جہاں پر پاکستان کے فارن آفس کی ڈیلیگیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کشمیر کی بھی ڈیلیگیشن ہوتی ہے, جس میں صدر ریاست یا پھر وزیر اعظم ریاست ہوتے ہیں, اور ساتھ میں انڈین آکوپائڈ کشمیریز کی ریپرزینٹیشن APHC کرتا ہے, آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں. یہ وہاں پر جا کر بات کرتے ہیں, یورپین پارلیمنٹ میں یہ جا کر بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن میں جاتے ہیں, ہر جگہ بات کرتے ہیں. میں اس ادارے کے توسط سے ریکویسٹ کروں گی کہ میڈیا جتنی کوریج فارن آفس کے ریپرزینٹیٹیوز کو دیتا ہے, للہ AJK کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی دے, تاکہ AJK کے لوگوں کو بھی لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان کو اور پاکستان کے شہریوں کو بھی پتا چلے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے, کہ کشمیری ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان اور کشمیر مل کر اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے. کشمیر یا کشمیر کے ریپرزینٹیٹیوز کچھ بھی کر رہے ہوں حکومتی سطح پر, اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں مور ناچا اور کس نے دیکھا. تو وہ جو مور ہے جو ہمت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اس کو دکھانے کی ذمہ داری میڈیا پر ہے. سو آپ لوگ کوریج دیجئے کشمیر کو,
روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کو 1 سے 2 گھنٹے ہر میڈیا چینل دے. میں شہریار آفریدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سر پلیز the media must play its role in talking about کشمیر. آزاد جموں کشمیر بھی دکھائیے. وہاں پر ہندوستان کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بیکورڈ ہے, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, نہ تعلیمی ادارے ہیں. یہیں کے میڈیا چینلز جب اچھی خبر دیں گے کہ سڑکیں اچھی ہیں, ہمارا لٹریسی ریشیو کتنا ہائی ہے, اتنے چھوٹے سے خطے میں 5 یونیورسٹیز ہیں, 3 میڈیکل کالجز ہیں, تو اثر پڑتا ہے. جو نا امیدی دوسری طرف نظر آتی ہے اس میں شاید کچھ کمی آئے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ اس طرح کے جو پازیٹیو انٹرونشنز ہیں وہ بھی لیے جائیں گے, اور اس میں جیسا کہ ہمیشہ حکومت پاکستان نے ساتھ دیا ہے, اب بھی آگے بھی دیتی رہی ہے, دیتی رہے گی. کیونکہ کشمیر بذات خود کشمیر اپنا کوئی بھی معاملہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں پیش نہیں کر سکتا. ہمارا وکیل ہے پاکستان, ہمارا کام ہے پاکستان تک آنا اور اپنا معاملہ بتانا. ہمارا وکیل ہے پاکستان اور وہ ہماری ریپریزنٹیشن کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس ریپریزنٹیشن کو اس میں بس کشمیریوں کی ایڈیشن میڈیا میں دکھانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ میں جب اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں, جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, تو وہاں پر مطلب انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. دکھ کی بات ہے کہ ہم باہر کیا بتائیں گے. ہمیں اپنے ملک میں اپنے نوجوانوں تک یہ آواز پہنچانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, ہمارا آزاد ریاست کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے, وہ کس پیرائے میں ہے, وہ کس ایگریمنٹ میں ہے. ہماری سارے فورن جو معاملات ہیں, ریلیشنز ہیں, وہ تو ہے ہی پاکستان کے پاس. So there is minimum understanding of how this relationship works. تو اس پر بھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور 5 فروری آ رہی ہے, اور اسی لیے میں نے یہ سارا کچھ آپ سے شیئر کیا کہ یہ ایک وعدہ ہے اپنے ساتھ کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, اور ہم نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو لے کر چلنا ہے. ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اور اس میں اضافہ کرنا ہے. اور یہ زمانہ ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, اس میں پریزنس, اس میں اپنی بات آگے بڑھانا انتہائی ضروری ہے. ایمبیسڈر ندیم ریاض صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو میں بہت مبارکباد کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ بہت اہم کانورسیشن کرواتے ہیں, آپ ہمیشہ کشمیر کو یاد رکھتے ہیں, اور اسی طرح سے جو باقی حکومتی ادارے ہیں اور جو بقیہ ادارے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. اور اس سے کشمیریوں کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ہمیں یاد رکھا جا رہا ہے, ہمیں بھولا نہیں جا رہا, ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور یقیناً کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں which call for a plebiscite, that will happen one day. But till that day we must not forget, we must remember, and we must document the atrocities that are taking place. We are no less than Bosnia, we are no less than Palestine. Our problem is, sadly, the media is not interested. It does not find Kashmir and Kashmiris attractive. We're not saleable. It is our dilemma. So package us properly. We are who we are. We are people in pain. We cannot sell ourselves. But our stories need to be told. They need to be presented in such a manner that people can associate and they can feel our pain. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Thank you, Ms. Farzana Yaqub, for your very noteworthy remarks. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ کشمیر کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے. With that being said, I would like to request Mr. Shahryar Khan Afridi, who is the Chairman Parliamentary Committee on Kashmir, to share with the audience his valuable remarks. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله المولانا العظيم. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज जिस नहज पे हम खड़े हैं और जहां पे हर एक नए इंटरेक्शन में पैनलिस्ट की अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज ग्राउंड रियलिटीज को डिपिक्ट करते हैं. और टॉपिक जो आपने आज रखा है, बिकॉज 5th Feb सॉलिडारिटी विद कश्मीर, जो कि जिस कमिटमेंट से मनाया जाता है और उसमें जो ऑफ लेट जो इंटेंसिटी आई है, जो एक पैशन और कमिटमेंट इंजेक्ट किया गया है उसमें आफ्टर 5th August 2019 एब्रोगेशन ऑफ 35A and 370. तो आज सबसे पहले IRS को, एम्बेसडर नदीम साहब, आप और आपकी टीम, you have always been there for anything related to Kashmir and national interest of Pakistan. You have proven your worth, your commitment speaks in high volumes, so hats off to you and to your team. फिर आज मैं कुछ आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा. मैं कल, मुझे यूके के एक नंबर से एक पोस्ट शेयर की गई और वो ये थी कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मतलब मेरे बारे में कश्मीर कमेटी ने कुछ नहीं किया. अब आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है. एक माँ, एक बाप, एक बहन, एक भाई, एक भाभी, एक दामाद, रिश्ते जो खानदानी, जो बेसिक बेस लाइन है खानदान की, उसकी लिमिटेशंस हैं. जब तक यूनिटी ना हो, जब तक कलेक्टिव अप्रोच ना हो, जब तक पूरा हाउस होल्ड एक पेज पे ना हो, फिर क्या होता है? बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं. आज आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, एंड प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बातें मेरी बहन ने रखी कि हमें पैकेज करें, मीडिया हमें प्रॉपरली, ग्लोबली, रीजनली, नेशनल लेवल पे यूथ समेत उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा जिस तरह कश्मीर पैलेस्टाइन कॉज है या जो भी इससे पहले हो चुका हुआ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स. फिर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के हवाले से ग्लोबल लेवल पे एक प्रोजेक्शन, एक प्रमोशन इनिशिएटिव होना चाहिए. फिर वो जो मंथली बेसिस पे जो ग्राउंड पे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, उनको भी हाईलाइट करना है ताकि दुनिया को और सबसे ज्यादा पहले अपने यूथ को और अपने लोगों को पता चले. अब जरा नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि what I am going to share with you will make a lot of difference and will make you satisfied, and you will be automatically, after listening to that, आप खुद इस कॉज के साथ जुड़ते जाएंगे. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जब इस फ्लोर पे यहाँ मुझे बुलाया गया तो हमने एक चीज जिसको पहले सीरियस नहीं लिया गया या ड्यू टू डिफरेंट ऑड रीजंस उसको वैल्यू नहीं किया गया, वो रोल ऑफ प्रोफेशनल्स था जिसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज थी, चाहे वो एकेडेमिया में हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो लॉ फेयर के हवाले से हो, चाहे जिनके पास कल्चरल डाइवर्सिटी और उनके पास परफॉर्मिंग आर्ट और किसी तरीके से लिटरेचर और कल्चर को और स्पोर्ट्स को एक करके एक ऐसा रोल प्ले करते या किया जाता कि जिससे दुनिया और अक्रॉस द ग्लोब
एक मैसेजिंग होती और दुनिया को एजुकेट किया जाता, वो ही नहीं दिखने में आया। हमने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। Number 2, all parties Hurriyat conference, the main key stakeholders. Yes, AJK की तमाम stakeholders का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रोल है। उनको हर लेवल पर एक्सेस दिया, हर इंटरेक्शन में मैंडेटरी किया, जिसमें वो नहीं आते उनको रीच आउट करते हैं। उसकी वजह क्या है? ताकि वो जो कुर्बानियां दे चुके, जिनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, उनको ये फीलिंग ओनरशिप मिले कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि दोनों ऐवानों को रिप्रेजेंट करती है, और पार्लियामेंट जो कौम की पहचान और बुनियाद और चेहरा है और आवाज है एक कौम की, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर हमने क्या किया? हमने दुनिया के टॉप नॉच, अमेरिका न्यूयॉर्क से लेके दुनिया के वॉशिंगटन, टॉप नॉच जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं, उनको रीच आउट किया, थिंक टैंक्स को। एंड यू विल बी एस्टोनिश कि मुझे जब यूएस में बताया गया कि आप पहले चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं कि जो हमें रीच आउट करने, और उनके पास टाइम कितना होता है? मैक्सिमम टाइम एलोकेशन आपके लिए वो 15-20 मिनट्स, मैक्स हाफ एन आवर कर ले। वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल है, आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए क्या वो इंटरेस्ट या उनको ये कंपेल करेगा कि वो इसको एक्सटेंड करें। एंड वो इंटरेक्शंस आधे घंटे के भी नहीं हुए, घंटे की भी नहीं हुए, 2-2 घंटे तक रहे, और उसमें पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टीम्स मेरे साथ होती थी। और फिर उनका ये कहना, आज ये लिख लें प्लीज, ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी कोई भी टूल जो है उसका, या फिर अपने दिमाग और दिल में लिख लें कि अमेरिकन क्या कहते हैं, उनके थिंक टैंक्स क्या सोचते हैं। उनके थिंक टैंक्स ये सोचते हैं जो उन्होंने मुझे कहा कि जी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर। हु बाय वी दी मीन्स दे मेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस टाइम पे कश्मीर के बारे में कंसर्न नहीं रखता। अब आम आदमी से ये बात करें और कोई मेरे अल्फाज यहां पे काट दे तो वो कुछ और उसको इशू बना दें। उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए इस वक्त हिंदुस्तान को और मोदी पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा मसला, इसलिए कि अगर हम वो ना कर सके हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कि सपोजिटली जिनको पहले रीच आउट नहीं किया गया, जिनके पास रिसर्च टीम्स हैं, जिनको हर चीज की खबर है। दे आर नाउ रेजिंग देयर वॉइस, दे आर टेलिंग एवरीवन, एवरी स्टेक होल्डर लाउड एंड क्लियर, एंड व्हाई वुड दे बी शेयरिंग इट विद मी, कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज को जो इस वक्त एम्बैरेसिंग है, किसी लेवल पर भी उसको प्रोटेक्ट करना इशू बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। अब हमारी पोजीशन ये है कि हम किसी तरीके से उनको डिसइंटीग्रेशन से बचाएं। ये मैं बात मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुका हूं। फिर क्या वजह है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो वहां पे बैठे हैं, उनको एक्टिवेट कौन करता है? मैं आज अपनी बहन को बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली हमने फर्स्ट ओवरसीज कन्वेंशन कराया। कश्मीर कमेटी का क्या ताल्लुक है ओवरसीज कन्वेंशन के साथ? हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मैं जब यूरोप जाता हूं, वो कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कि जीते मरते कश्मीर कॉज के लिए, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे ये कहा, एंड प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। उन कश्मीरी पाकिस्तानियों ने कहा कि आफरीदी साहब,
5 दहाइयों से हम यूरोप और अमेरिका में आबाद हैं। हमारी सेकंड जनरेशन पाकिस्तान से कनेक्ट थी, हमारी अब थर्ड जनरेशन कट रही है पाकिस्तान से। रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आप खुश हो रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं जाना चाहते पाकिस्तान, उनके इंटरेस्ट बदल गए हैं। उनको ओनरशिप दें, क्योंकि जब हमारे लोग पाकिस्तान जाते हैं जमीनों पे कब्जा होता है, हमें एयरपोर्ट पे एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, हमें वहां पे अपने लूटते हैं। तो हमारे सबसे ज्यादा जब अपने बच्चे, जब उनके साथ हम शेयर करते हैं या मियां बीवी बात करते हैं या बहन भाई बात करते हैं, तो इफेक्ट बच्चों पे जाता है एंड दे आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर रूट्स। तो हमने आपके लिए कुछ एक्टिविटीज रखी हैं एंड हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर ये बच्चे आपके साथ 5-10 मिनट भी बैठ जाएं, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। उन बच्चे और बच्चियों के साथ जब मैं बैठा, और अभी जब हमने ये वहां पे जब बैठा, तो इट लास्टेड फॉर मोर देन 3 आवर्स। उन बच्चे और बच्चियों ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आए, कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, हम उन बच्चे और बच्चियों को बुलाएंगे जिनके मिसपरसेप्शंस हैं। पहले मैंने अपने लोगों को जीतना है, जो मेरे हैं और मुझसे फिसल रहे हैं, उनको पहले मैंने ओन करना है, उन पे इन्वेस्ट करना है और उनको अपना एम्बेसडर बनाना है। अब आप कितने डिप्लोमेटिक टीम्स आपकी बातें करें, जब लोकल कम्युनिटी जो अमेरिकन पाकिस्तानी या अमेरिकन कश्मीरी उनके साथ जुड़ नहीं रहे, what will they be able to achieve then? तो हमने क्या किया, अभी जब हमने कन्वेंशन कराया, 413 फैमिलीज अपीयर्ड, अमेरिका, यूरोप, और उन्होंने कहा क्या, एक बच्ची ने मुझे कहा, शी इज अ डेंटिस्ट, थर्ड सेमेस्टर है उसका, और यूएस में दी बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है उससे वो पढ़ रही है वो बच्ची। उनके फादर जो हैं वो हलाल फूड सप्लाई करते हैं नॉर्थ अमेरिका को। तो उस बच्ची ने कहा कि जी, आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। नहीं, लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान आई वाज अबाउट 3 years old, so I would like to visit Pakistan. Now I am 20 years old and I would like to visit Pakistan because अभी आपने जो 3 घंटे, तो she came all the way, और उसके साथ पूरी फैमिलीज आई, वो घूमे फिरे पूरे पाकिस्तान में, और जब वो वापस गए हैं, अब उसका मैं इंपैक्ट आपको बताता हूं। उसका इंपैक्ट क्या है कि आज वो बच्चे और बच्चियां कनेक्ट हो गए हैं वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, वहां के डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो गए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, सिविल सोसाइटी, वो बच्चे और बच्चियां जिनकी सोशल साइंसेस या जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, थिंक टैंक्स के साथ इंटर्नशिप, पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान का जो यूएन कमीशन है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टीम है, उनको रीच आउट कर रहे हैं कि वहां पे उनको एक्सपर्टीज थोड़ी सी मिले, इंटर्नशिप मिले, एंड देन दे वांट अस एज अ स्टेट कि हम पाकिस्तान आके 3 माह के क्रैश कोर्स करके हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ एंगेज किया जाए, और हम यहां से जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो लेके जाएं, और फिर हम आपके एम्बेसडर बने। और ये अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये वो यूथ जिसके बारे में पेरेंट्स कहते थे, अब चीजें बदलने शुरू हो गई हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, मुझे डेबी अब्राहम जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कश्मीर के हवाले से उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वुड यू बिलीव, जब मेरा एक उनके साथ वेबिनार हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज एजुकेट मी अबाउट कश्मीर कमेटी। दैट वाज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर मी, हालांकि वो पाकिस्तान आ भी चुकी थी। सिमिलरली, जितने भी अमेरिका के कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मैन, विमेन, सबसे मिला, जितने भी स्टेट्स में मैं गया, they were clueless about Kashmir committee, the role of the parliament,
हमने उसको एक्टिवेट किया। हमने उसको एक्टिवेट करने के अलावा मीडिया को एंगेज करने के हवाले से ये कहा कि जी पैमरा के थ्रू, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बार बार उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, इसी तरह जनरल बाजवा साहब के साथ, इससे पहले डीजीआई के साथ, अब डीजीआई के साथ, सोल थर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दोज इंटरेक्शंस वाज कि हम कल्चरल फ्रंट पे अपने आप को स्ट्रेंथन करें। मिसाल के तौर पे केपीएल 1 सीजन 1 अनप्रेसिडेंटेड उसकी ग्लोबल कवरेज हुई। कश्मीर को ग्लोबली पोर्ट्रे हाईलाइट किया गया और वो तमाम आजाद जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जिस तरह उस 2 हफ्तों के बीच में ग्लोबली उठाया गया। और कौन उसके एम्बेसडर्स बने? वो बने जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स। आईसीसी ने जो उसमें रोल प्ले किया, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, और 2-3 ट्वीट्स जो आई, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीकन, मॉन्टी पनेसर ने जो ट्वीट की, उसमें जिस तरह हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ। PSL 2 आ रहा है, अब जो PSL 2 आ रहा है इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मुजफ्फराबाद। अब हम क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह सेमीफाइनल दोनों और फाइनल हम इंग्लैंड में करा रहे हैं। जब यहां पे उसके इनिशियल मैचेस हों, क्वार्टर फाइनल्स हो जाएं, लास्ट 3 मैचेस कश्मीर प्रीमियर लीग के जब इंग्लिस्तान में हो, और इंग्लिस्तान के ग्राउंड्स में जब कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वहां पे सिर्फ मीडिया के लिए, ताकि उससे हाइप मिले। हम रोड शोज कर रहे हैं, हम नॉर्वे जा रहे हैं, हम बेल्जियम जा रहे हैं, इसके अलावा हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोड शोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और उसमें कौन है? कश्मीर कमेटी के मेंबर्स के अलावा मेजर टीम जो है वो IOJ के और आजाद जम्मू कश्मीर के वो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस तमाम कॉज में मेरी टीम का हिस्सा है। मैं सिर्फ आपको आखिरी 2-3 चीजें जो बताना चाहूंगा। क्या वजह है, वाई एम हियर? IRS के साथ मेरा क्या इंटरेक्शन हुआ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं आपको बताऊं कि इसी तरह सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस 40 years of hosting of Afghan refugees, मेरे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं था कि मुझे ये पोर्टफोलियो मिलेगा। मैं एज अ स्टेट मिनिस्टर फॉर सेफ्रॉन, जब हमने 40 years of refugees के हवाले से जेनीवा में प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके गया, और वहां पे जब इंटरेक्शन हुआ और मुख्तलिफ इंटरेक्शंस में जब सेक्रेटरी जनरल के विजन को देखा, उन्होंने मुझे जब बताया कि मैं पेशावर में भी रहा हूं, मैं इस्लामाबाद में भी रहा हूं, मैं काबुल अफगानिस्तान में भी रहा हूं, मुझे अफगानी रेफ्यूजीज के हवाले से बहुत उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। फिर जब मैंने उनके साथ डिस्कशन की और उन्होंने हमें मिसाल के तौर पे स्टेटलेस, उन्होंने एक पैलेस्टीनियन बच्ची को दिखाया जिसको ब्राजील ने सिटीजनशिप दी। तो मैं जब मेरी इंटरेक्शन में जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा कि मेरा मुल्क 41 ईयर्स से रेफ्यूजीज को ग्लोबली ओन कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। सेम इज द केस विद ईरान। हमें तो कभी भी आपने इन फोरम्स पे ना ग्लोबली हाईलाइट किया, ना हमें ओनरशिप दी, ना हमें प्रमोट किया। ब्राजील के एक केस को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी कि आज दुनिया के सरबराहानों के सामने आप ब्राजील को प्रमोट कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्राजील। तो मुझसे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मैंने कहा आई वांट यू टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जी ओके, आई एम गिविंग यू माई वर्ड दैट आई विल बी कमिंग टू पाकिस्तान। और उसके बाद जब 40 years of hosting हमने इस्लामाबाद में किया, इसी पाकिस्तान के दारुल खिलाफ में खड़े होके उन्होंने यूएन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर जो 18 के करीब हैं, उन पे क्या उनको इंडोर्स किया और उनको यहां से कहा कि दे आर इंटेक्ट। वो जो मिसपरसेप्शन हिंदुस्तान फैला रहा था वो डिफ्यूज हुआ। सिमिलरली वी नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स। हमें रीच आउट करना है उनको जो मैटर करते हैं। आज मैंने बहन से कहा, जब मेरी बहन आई बात करके, तो मैंने कहा शुक्र है बहन, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड
कि आज फिर आप इमोशनल होंगी, मैं भी एक पश्तून कबाइल हूं, बहनों को और बेटियों को कि आंखों में आंसू देख के कुछ अजीब सी कैफियत होती है। तो लेट मी एश्योर यू, और आज मैं आपको कह रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, बिकॉज हमारा MOU साइन हुआ है, आई एम ऑफरिंग यू राइट फ्रॉम हियर, जिस तरह ऑल पार्टीज यूरेट कॉन्फ्रेंस के तमाम स्टेक होल्डर्स मेरी हर इंटरेक्शन टीम का हिस्सा हैं, I offer you to become a part of Kashmir committee. See it with your own eyes. Play your role. Raise all those questions which you have in your mind. Become a part of that team. We will provide you all those opportunities and then see the difference. So end में मैं ये कहना चाहूंगा, please किसी कौम को गिराना हो, मायूसी फैला दो, किसी घर को गिराना हो, मायूसी फैला दो। एक छोटा सा वाकया, और ये मैं कश्मीर के हवाले से, एक ऑफिस में बॉस ने किसी गलती पे अपने एक टीम प्लेयर को कहा कि कल जब मैं आऊंगा तो पहला काम ये करूंगा कि तुम्हें मैं काम से फारिग कर दूंगा और मेरा तुम्हारा ताल्लुक और इस इदारे का ताल्लुक तुमसे खत्म हो जाएगा। वो बंदा जब आया तो उसने 25 साल जिंदगी के उस इदारे को दिए थे। जैसे रीमा जब भी बात आती है तो जब वो रिक्वेस्ट करती है तो शहरियार भाई उसके अल्फाज कुछ और होते हैं, जब इवेंट खत्म हो जाए तो रीमा दूर तक पता नहीं कहीं मेरी बहन नजर ही नहीं आती। इसी ये अपने टारगेट कैसे अचीव करने हैं, ये भी एक कमाल है। तो वो जब बाहर आया तो उसके साथ 8-10 जो उसके कॉलीग्स थे, उन्होंने कहा कि जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मेरा तो सारा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी के 25 साल। और उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। 7 दोस्तों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक सेंटेंस बोलेंगे और स्टार्टिंग इट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ जो उस इदारे का हेड था। इदारे का हेड सुबह उठा, तैयार हुआ, जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पे उसका एक टीम प्लेयर, तो अस्सलाम वालेकुम सर, सर आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा जी हम परफेक्टली ऑल राइट। कहते हैं सर आपका रंग पीला है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाड़ी में बैठ के पार्किंग लॉट में जब पहुंचा, दूसरा बंदा खड़ा था, उसने भी वही सेंटेंस दोहराया। थोड़ा सा आगे गया, लिफ्ट के पास तीसरा खड़ा था, लिफ्ट से जब अपने जिस फ्लोर पे उसने जाना था वहां पे चौथा खड़ा था, 5वां दरवाजे पे खड़ा था, छठा जब ये अंदर गया तो वो आया, उसने कहा, तो जब 7वां पहुंचा तो उसने कहा मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। व्हाट डज इट मीन? नेगेटिविटी। कौम को गिराने के लिए ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, डिमकाना हो गया। डोंट फॉरगेट वी आर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, alhamdulillah. We are a country which is blessed enormously. We have got a dynamic diaspora. हम एक ऐसी रियासत है जिस पर कौमें फख्र करती हैं। आप कुछ भी कर लें, आई हैव लिव्ड इन यूरोप, आई हैव लिव्ड इन मिडिल ईस्ट, कौमें, दूसरे कौमों के लोग आपकी सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। इस मुल्क में आजमाइशें जरूर आई हैं, ये मुल्क अजीम कौम बनेगा इंशाअल्लाह, और है। अंडरमाइन ना करें किसी भी इंडिविजुअल के खानदान को, उसके घर को चैलेंज करो, वो फिर प्रूव करता है अपनी वर्थ को। वी हैव गॉट एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी रियासत है हम, जिस क्या जरूरत है, अब ये जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस कहते हैं, ये ग्लोबल जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जो हर दौर में पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपनी पहली वक़्त का एहसास नहीं था, इसलिए अगलों की थोड़ी सी आंखें निकालने में उनका साथ। अब आजमाइश तो आएगी, आप जब उनको चैलेंज कर रहे हो, अपनी सॉवरेनिटी प्रूव कर रहे हो कि आई एम नॉट सबसर्विएंट, आई एम नॉट अ स्लेव, आई एम नॉट आंसरेबल, आई विल टेक माई ओन डिसीजंस एंड आई विल बी अ पार्टनर ओनली इन पीस। और मेरे मुल्क की कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी, मेरे मुल्क के लोगों को अंडरमाइन नहीं किया जाएगा। मेरे मुल्क के वो लोग जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, चाहे वो लेबर्स हैं, चाहे मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में, उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उनकी मैं आवाज बनूंगा, अपने मुल्क की मैं आवाज बनूंगा। वो तमाम जो कमिटमेंट्स इससे पहले कौमों के साथ हुई, एनर्जी में, किसी भी शोबे में, चाहे वो सी पैक के हवाले से हैं, जिस हवाले से हैं, जब एक कौम अपने आप को कमजोर समझती है
वो कौम बिखर जाती है। शुक्र अदा करें, एक ऐसी कौम है और वो उनसे पूछें, वो कौमें जो अपनी रिवाइवल के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही हैं, लेकिन दूर दूर तक उनको कुछ हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। सो हमें यूथ को ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, खुद हिस्ट्री पढ़ें और हिस्ट्री आपको प्रूव करेगी एक चीज कि कौम बनने में क्या क्या कुछ गंवाना पड़ता है, लेकिन जब कौम बन जाए उसको अगर गवा दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तारीख भी आपको माफ नहीं करती। सो वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। वी हैव competed with India. We have made them realize that whatever happened in the past, let's not get into the past, but inshallah we have exposed India to the core. The world has started now observing and interacting with that India which has been exposed of late in a different manner now. अब हिंदुस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान बड़े बड़े वादे कर चुका था कि हम ये करेंगे, IIJK में इतनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करें। जाएं ग्राउंड में देखें, वो उनको जीत नहीं सके जिनको 30-30 साल जेलों में डाला हुआ है। वो उनको हरासा नहीं कर सके जिनके बच्चे बेटियों और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिए। They will never be able to defeat us. हाँ, शिकस्त आप इधर मानते हैं तो फिर आप हार जाते हैं। We are a country which has the ability, inshallah, to take this motherland to a different level. We need to become one. और यही चीज मैं कहता हूं, मेरे साथ कमेटी में तमाम पार्टीज के मेंबरान हैं। When it comes to Pakistan, when it comes to Kashmir, we all are one. Let's value this. Let's promote this. And inshallah, when it comes to Kashmir cause, we have initiated every particular initiative which can benefit Kashmir cause, and together we'll make a difference. Long live humanity, long live Kashmir and Pakistan. Thank you so much. Thank you, Mr. Shahryar Khan Afridi, for your valuable remarks. Now, I'd like to introduce our next panelist, Dr. regarding the demographic changes in the Indian allegedly occupied Jammu and Kashmir. Over to you, sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable Ambassador Nadeem Saab, Madam Farzana Sahiba, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Springer was one of the great scholars of international order. He says when power corrupts, when power fails to overcome the weakened, the power becomes monster. And same has been happening in Germany, and same is being happened by few superpowers who are trying to digest the entire nation. I have a privilege to work on each and every field of the Kashmir issue, physically, mentally, and now on the research and academia. So I want to be structured, and I think you may benefit from my work which I have done for Kashmir cause. Our present problem is that people say that genocide is not continuing. And they are thinking that genocide is going on, that it is unfortunate. But I will prove that genocide is continuing at multi-fronts and dialectically. Scientific understanding of population is very must. We must be very much structured, scientific, and we must be provide the data which shall be from primary sources, which can be tested and which must be public. That is the scientific inquiry of anything. Warren Thompson's theory in 1990 is that demography changes have three distinct characters. Number one, first stage.
First stage is when birth rate and death rate is same. And the population is constant, always. And second stage is when high birth rate, in continuity, slow death rate. The population will increase. And again, at the three stage, when normal birth rate and high birth rate with low economic opportunity, it has been disappeared. The slide has been disappeared. With low economic opportunity, physiological factors and migration, when they combinedly work, it brings democratic shift, and same is happening in Kashmir. Now, what has been added, this was a presentation presented by me to OIC delegation, which was the opportunity given by the Foreign Office to invite them in the Kashmir committee. Now, what has been added in that presentation, that is very important. I have collected 13 cases from Indian occupied Kashmir. The youth whose genital organs has been tortured and they are unable to marry and give birth to new offsprings. And I have the evidences, including videos, their interviews, and the FIRs they have launched in civil public. Now, this is a systematic genocide. Now, I will know, is it first time happened in Indian occupied Kashmir? No. Our population in 1891, when we were ruled by Dogra, to 1951, this was first census. And our total population was 25,43,90,29. And including GB, 1,67,000, and there was an increase of 22% when they liberated from the Indian yoke. And again, if you see the demography from 1941 to 2020 in Indian occupied Kashmir, only one thing changed. In Dogra regime, it was a Hindu Dogra and the Hindu Pandits were on the bureaucracy. And now on post 47, the Indian government came in the power and same bureaucracy, the Indian Pandits. Do you know what Indian Pandit mean? We have been inculcated in the English dictionary the term political Pandit. And the first raw chief of India was from Srinagar, R.N. Kaur. Both from Pakistani side and from Indian side was Jawaharlal Nehru, a Kashmiri Pandit Nehru, who liberated the India. And same was the concept given by Allama Iqbal. He was a Kashmiri Pandit Sapru, who was having the main pivot to give the North Indian states with or without British rule, was the first concept given by Allama Iqbal in 1930. Now the demographic shift is systematic, consistent, and coherent. And this is a statistics provided by Indian census. It has nothing to do from any data from Pakistani side, so that you may say that it is fabricated or it is propaganda. Now I will say that there are 13% which they have to cap in post 5th August 2020. सिर्फ 13% पे इंडिया को काम करना है जिससे वो पॉपुलेशन को बराबर लाएगा. और उस 13% में क्या है, जो हिंदूज है वो जो है वो डोगरा रेजिम में जो थे उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी उस वक्त 76%, जो सिर्फ 3,76,812 थे.
और अगर आप इसको 1947 तक लेंगे तो उस रेजिम में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 13,48,000 थी, इंक्लूडिंग जीबी एंड लद्दाख एंड जम्मू। तो ये 1947 में 2.5 लाख लोग इसमें शहीद हुए जो जम्मू के माइग्रेंट थे, और बाकी तकरीबन 1 मिलियन के करीब डिस्प्लेस हुआ। वो अगेंस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया। तो 13% पे काम करने के बाद इंडिया को करना क्या है? क्या इंडियन एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंटैक्ट है? साइंटिफिकली हम देखते हैं कि क्या मॉड्यूल, क्या इंडिया ने, क्या हमने कुछ लर्न किया हिस्ट्री से? नो, नॉट एट ऑल। तो जो इंडिया की 7 स्टेट्स थी जिनको आप 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें से यही हुआ त्रिपुरा में भी, उसमें हिंदू, बौद्ध, चकमा और नागा को उड़ा दिया गया। दे हैव बीन ब्रॉट इन द माइनॉरिटी। और आसाम को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, और उसके बाद मणिपुर में भी यही हुआ और नागालैंड में भी यही हुआ। तो क्या ये नई चीज है जो कश्मीर में वो कर रहे हैं? नो, इट इज ऑलरेडी ए प्रूव्ड एम्पिरिकल मॉड्यूल applied by India in northeast states। ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि जब आप मूवमेंट को चलाते हैं तो डायस्पोरा लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। जो पाकिस्तानी अब्रॉड है वो डायस्पोरा नहीं है। डायस्पोरा सिर्फ उसको कहते हैं कि जो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भाग गए। दे आर ओवरसीज पाकिस्तानी, नॉट डायस्पोरा। और आजाद कश्मीर वाले भी डायस्पोरा नहीं है, यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं 1947 के बाद। तो डायस्पोरा उस कम्युनिटी को कहते हैं कि जो 1970 में जनरल टाइटस ने जीनोसाइड किया था ज्यूज के खिलाफ। उसमें 3.5 लाख लोग जो मारे गए थे और 2.5 लाख लोगों को वो हाँक के ले गया था। तो वो डायस्पोरा हुआ डिस्टर्ब, इंतशार का जमाना। तो फिर जीव कब आया वापस? मुसलमानों ने 2 दफा जब फलस्तीन फतह किया तो दोनों दफा ईसाइयों से लिया, जीवों से नहीं। जो 2223 साल के बाद 1932 में जब बेलफास्ट एग्रीमेंट हुआ वापस आया। तो एज अ कश्मीरी फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैं 3 लेवल्स पे तहरीक आजादी को कंटिन्यू रखूंगा, वेदर एनीबडी सपोर्ट्स मी और नॉट। नंबर 1, जो मेरी आर्मड स्ट्रगल है। नंबर 2, द पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो अब मेरी एप्रीहेंशन क्या है? जब सिख मूवमेंट 1984 की उसकी रेबेलियन मूवमेंट खत्म होगी तो उसकी पॉलिटिकल मूवमेंट भी सस्टेन नहीं कर पाई। तो मेरी पॉलिटिकल मूवमेंट भी सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर मैं रेबेलियन जारी न रखूं। और नंबर 3 जो इस वक्त हो रहा है कि 1984 में उन्होंने जनरल डीजीपी गिल को इस्तेमाल किया पुलिस एज अ पुलिस टू किल द सिख मिलिटेंसी एंटायरली। और आज मकबूजा कश्मीर में उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह को वही असाइनमेंट दिया। कश्मीरी को किल करेगा और उसमें हिंदुस्तानी फोर्सेस उनको सपोर्ट करेगा। सो जीनोसाइड इज डायलेक्टिकल at a multi-dimensional level, and there must be no iota of doubt in it. Now मैं conclusion पे आता हूं। I don't want to waste the time of the scholars. Now पार्टी कश्मीर के 2 ही पार्टी हैं, एक है स्टैट्स को, दूसरा एंटी स्टैट्स को। एक है फ्रीडम फाइटर, दूसरे हैं कोलैबोरेटर। In what so position he is existing? If he is a collaborator, he is my enemy. If he supports status quo by hook or by crook, he is not my friend, not at all. Now आप कर क्या सकते हैं अब ये कंक्लूजन में, what we can do? तो उसमें आप देखें ना 150 जो है वो हमारे जो दलित है, 1,50,000 5 अगस्त
2019 के बाद उनको उन्होंने सिटीजनशिप दी। ये सिर्फ डायलेक्टिकल जब मैंने कहा तो ये मल्टी डायमेंशनल होगा। उसमें आप एक साइड पे डेमोग्राफिक्स नीचे लाते हैं, दूसरे साइड इस पे आप बाहर वालों को स्टेट सब्जेक्ट देते हैं, तीसरे साइड पे आप जीनोसाइड करते हैं। जीनोसाइड क्या करते हैं? 1 लाख लोग जो हमारे शहीद हुए उसमें 82% जवान शहीद हुए। वो जनरेशन जिसको मेरी मकबूजा कश्मीर की जनरेशन चलानी थी, और ये 62 लाख में तब्दीली आई। यानी मेरी जो इस वक्त कुर्बानियां हैं वो 8.1% के हिसाब से है। और उसमें आप बच्चे निकालें और बूढ़े निकालें और नाखेज निकालें। ये मेरी जनरेशन जो थी, यही मेरी जनरेशन को कंटिन्यू कर पाती बाकी पीरियड्स के दरमियान। ये 7.7% बनता है मेरी कुर्बानी उसमें जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जा रहे हैं। उसके बाद लैंड लॉस जो 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन बनी, उसमें लैंड लॉज में तब्दीली की गई। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट किया गया कमर्शियल लैंड में, और जो कंटोनमेंट एरिया है 15, 14 और 13 कोर्स को, उनको ईच कंटोनमेंट 2000 एकड़ फर्दर दी गई है। तो जो मेरी लैंड है, ये वैली है ही टोटल 111 किलोमीटर लेंथ और 84 किलोमीटर ब्रेड्थ। उसमें जब आप लैंड देते हैं एग्रीकल्चर लैंड आर्मी को, तो वहां सिकीज होती है। तो अगर मैं कहूंगा दिस स्टेज इज एट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द मायहम, तो कोई बात नहीं है, तो इसको सीरियस लेना चाहिए था। अब तीसरी बात यह है कि अब हम कर क्या सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। मैडम फरजाना याकूब आजाद कश्मीर की बात करती है, आजाद कश्मीर के मसाइल की बात करती है, तो इस वक्त आजाद कश्मीर को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था एज ए पाकिस्तान द लोन। लेकिन जब भी आते हैं तो ये अपनी स्टेज की बात करते हैं, अपने मसाइल की बात करते हैं। वन हु इज ब्लीडिंग हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू पुट द गॉज ऑन हिज वॉन्ट्स। वो सियासत नहीं करते, वो जो ब्लीड कर रहा है, जो डेथ बेड पे है, उसकी बात करता है, सिर्फ उसकी बात, नथिंग एल्स। क्योंकि डैम तो वहां भी बने, डैम तो आजाद कश्मीर में भी बने। 7,56,000 माशाल्लाह आपके फॉरेनर में है, बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी विद 9 पार्लियामेंटेरियंस। तो ये आजाद कश्मीर वाले लोग उनको इस्तेमाल कर सकते थे। इट वॉज अ बिग अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी on which we could have banqued upon, big constituency। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये 90 के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, और ना ही मुझे एक ज्यादा उम्मीद है कुछ हो जाएगा इस हवाले से। और नंबर दो है, जो सेकंड है कि आजाद कश्मीर एक बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकता है डायस्पोरा, जो उनका ओवरसीज कम्युनिटीज है। दे आर नॉट डायस्पोरा, दे आर ओवरसीज आजाद कश्मीरी कम्युनिटी। अब जो डायस्पोरा है वो 5,632 टोटल हैं, जो बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारे पास तो पासपोर्ट देते ही नहीं है, इसलिए हमारे बहुत सारे लोग बाहर है ही नहीं। इसलिए जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो बाहर नहीं है, बहुत कम है। और जो इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग हैं यही बाहर कम्युनिटी है। आप बताएंगे कि ये कैसे इस वक्त हमें मदद कर सकता है। सिख कम्युनिटी की जब आर्म्ड स्ट्रगल भी खत्म हो गई, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी खत्म हुई, उन्होंने पूरी दुनिया ने सिख कम्युनिटी ने रिपल्स, दे क्रिएटेड द रिपल्स इन इंटरनेशनल इक्विवेलेंस ऑफ द पावर बाय कंबाइनिंग द डायस्पोरा कम्युनिटी। वो हम कर सकते हैं। यही एक ऑल्टरनेटिव है। जब आप किल किए जा रहे हैं, जब आपकी डायलेक्टिक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है, तो वो रिलीफ दे सकता है। क्योंकि आई हैव टू रीच टू इंटरनेशनल इक्वलिटीज ऑफ द पावर विच मैटर। आप सारे पाकिस्तानी हैं तो आप हमारे हमदर्द है, जाहिर सी बात है, आप हमारे साथ चलते हैं। लेकिन मैंने वहां पहुंचना है जहां से मैं इस बात को आगे बढ़ा सकूं, वो सॉफ्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी है। और अब 3 ही जरिए है मेरे पास, थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज
policy makers and then policy drivers. अब जब आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. दिस इज इफेक्ट नॉट द कॉज. मैं अगर अभी स्ट्रगल छोड़ दूंगा तो हिंदुस्तान नहीं मारेगा मुझे. प्लीज क्लियर इट. दे विल नेवर किल मी, बस जस्ट आई हैव टू बी साइलेंट and bow his power. Actual human rights is the right denial of right to self-determination. इसका जो इफेक्ट आ रहा है जब मैं रेजिस्टेंस कर रहा हूं, वो मुझे मार रहा है. अब होप क्या है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर द स्कॉलर्स. सर नदीम बैठे हुए हैं, मेरे मेंटोर हैं, बहुत इनसे सीखा है. अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है. अब इंटरनेशनल ऑर्डर में इसको कहते हैं मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. जॉन्स थॉम्सन की थ्योरी है, वी बोथ फियर विद ईच अदर. इंडिया हमसे डर रहा है, हम उनसे डर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन, द वॉर इज वन बाय नन. दोनों साइड पे डिस्ट्रक्शन हो गई. वार तो ऑप्शन ही नहीं रहा. इफ वार इज नॉट ऑप्शन, तो एक चीज को आप छोड़ दें, तो उसके बाद आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, तो आपको आसानी हो जाती है साइंटिफिकली किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए. दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी. क्वांटिटी हमेशा एनिमी से जाहिर रही है, वेदर इन ज्योग्राफिया, वेदर इन मिलिट्री, ईदर इन मिलिट्री आर्सेनल्स और इकोनॉमी. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप ट्रिकल डाउन करें इसको साइंटिफिकली, फिर आपके पास है क्वालिटी. अब ये क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी. अब क्वालिटी में हमने पहले भी फॉरेन ऑफिस को ये रिकमेंडेशन की थी कि जो यूनाइटेड नेशंस की करारदाद है 47/1948 की, इसके मुताबिक जो रेजोल्यूशन नंबर 21 है अप्रैल 1948 की, वो कहती है कि वो सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जो आजाद कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर या आजाद कश्मीर में 47 से यहां है, ये तकरीबन 20 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनको आजाद कश्मीर असेंबली में 9 सीट्स दी है. इनको आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और ये कहें हम वापस जाएंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट, और इनको सिर्फ यही नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला का एक्ट 184 सेक्शन 10 1982 जो डिस्प्लेस हुए हैं कश्मीरी, वो सारे स्टेट सब्जेक्ट सब कश्मीरी है. ये कहें कि ये वापस जाना चाहते हैं, इंडिया तो उनको लेगा नहीं, बट इट विल बी अ बिग न्यूज व्हेन वी आर एड्रेसिंग द डेमोक्रेटिक शिफ्ट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. और ये उस वक्त बड़ा अहम बनता है जब ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इंटेंसिफाई करती है डायलेक्टिकली, और आपको कोई सोल्यूशन चाहिए. और उस सोल्यूशन में जो थिंक टैंक्स का काम है, उसमें वो 2 चीजों पे ये सोचे और इसको फर्दर कैसे डायलेट करती है रिसर्च फर्टिलिटी. इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स को निकालें, व्हाट इज पॉसिबल, उस पे आगे बढ़ें. और आखिरी कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन मकबूजा कश्मीर के हवाले से करनी है जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो है कैपेसिटी बिल्डिंग. हमें कितनी कैपेसिटी है उन एनजीओज का जिनके पास इकोसाक है वर्ल्ड में. हमारे पास 1700 केस स्टडीज है जो हमारे पास तैयार है. क्या हम एक केस स्टडी एक इंडिविजुअल एनजीओ हर साल किसी भी मुल्क में उठा सकती है, तो इट विल क्रिएट रिप्लेस. नंबर 3, यूएनएचसीआर में 27 मेंबर्स होते हैं, उसमें मुसलमान 9 मेंबर है, तो उसमें हम रेजोल्यूशन नहीं मूव कर पाते. हमने 1984 में एक रेजोल्यूशन मूव की जिसमें हमने ईरान के कहा आखिरी वक्त तक मैं सपोर्ट करूंगा, देन शी बजट एट द 11th आवर, और हमने रेजोल्यूशन वापस ली. हम आज पिछले 70 साल से
यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका होमवर्क क्या था और 70 साल के बाद क्या होमवर्क है? तो सेट साइंटिफिक मॉड्यूल है, इफ यू विल रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट the result will be same. It is a universal order. None can change it. Then you have to change your experiment and you will get different result. मैं इसी पे conclude करूंगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. Thank you so much, Dr. Waheed Rasool, for your very well-researched comments. And thank you, audience, for your patience. Now, I would like to call upon stage our last panel for the subject matter, Ms. Shamim Shawl, Women Leaders All Parties Hurriyat Conference, to enlighten us on the women's struggle for freedom in Kashmir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत ही शुक्रिया IRS इंस्टीट्यूशन का मिस्टर प्रेसिडेंट. मैंने भी कुछ चीजें लिख के लाई थी. I would like to share with you the pain, the agony, the difficulties, but the beautiful dream, the dream with the people of Jammu and Kashmir saw in 1947 when subcontinent was divided into two dominion, India and Pakistan. A dream of free nation where our children can have all opportunities to grow, build and explore their abilities and lead their country towards prosperity, development, and make us proud as other children of the civilized and free world. The same dream was seen by Martin Luther King, and he realized it. In his famous speech, I quote, "I have a dream," said, "but our children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character." But we fail to realize our dream. If we go back to history and try to find out the reasons and the answer is the failure of the leadership, the interference of British Empire, and claim for the ownership of state. These failures have made the division of Jammu and Kashmir more shameful than Berlin Wall. It had made our dream different from others. It has changed the life of our future generation, who have many questions to ask. At this time when I'm talking to you, I am away from my home and homeland. I am reminded of the book written by an English author who was remembering his village, his streets and ponds, a small school and fellow ones, his parents and everything which is in his memory. He's always said, being a well-known writer, he always seems a small boy weeping for his lost ones. At the end of the book, I found myself weeping. Is this my story? Story of my children, or the story of every Kashmiri away from home? I am not able to understand or differentiate the multiple standards of the world waiting for UN resolutions to be implemented or a peaceful resolution of our long lingering problem. The dream of my homeland become free from any occupation coming true. I always found those people becoming emotional who are not allowed to see their land and flowers. These innocent people and peace-loving people carry their dreams in their vacant eyes, waiting a miracle and observing millions of lives losing lives unfulfilled.
But still today, the story is same white and black. The relationship between two countries is poisoned and deep-rooted due to hard-knit mindsets. We were taught in childhood that we are a nation living together, promoting love and peace and advocating justice. We, however, were pushed towards war without weapons. It is essential now to investigate the role of those who have authored the birth of the tragedy. In present time, this distant past history makes every Kashmiri now thinking to die till the freedom. India can kill us but not break the spirit of freedom. The feeling among young generation towards Indian occupational forces is guided by the behavior of these forces. A point of no return has created a dangerous situation for the people. What is most important is to create a space for advocating the Kashmir cause in international corridors or diplomacy to guarantee access to all working for human rights and also the international media. It needs to be emphasized that in the absence of global security, Kashmir has become a graveyard of human rights, where people have been denied all the fundamental rights and human right, their right to life is at stake. The policy of our leadership, of course, should be guided by the existential realities and the circumstances those are faced by the struggling people. India always tried to break down the will of the people and cheat the world. I tried to dominate the region. It tried to dominate the region and become a hegemonic power in the region. And even now, it is not a question of individual parties, but survival of a nation. If we go back to history, we find late Jawaharlal Nehru committed that, I quote, "We have declared that the fate of Kashmir is ultimately to be decided by the people. That pledge we have given, and the Maharaja has supported it, not only to the people of Kashmir, but to the world. We will not and cannot back out." To understand the implications of imposed war on Kashmir psyche is basically an Indian attempt to create a fear and helplessness among the people. World accepts the determination of the people of occupied Jammu and Kashmir, including the role being played by its brave and courageous daughters. Their children and male members either are taken away from them to different Indian jails, killed in cold blood, or disappeared during these years of imposed war. They forced women of Kashmir to live the most difficult life without male members. The women who survived in this conflict zone are playing active role in social and political setup. The world does not yet know their contribution. Their suffering is not dimensioned. Their voices are not heard. They are raped in Kunan Poshpora and everywhere in occupied Jammu and Kashmir. Their husbands are disappeared and they got title of half widows. These brave women organized and formed a party of association of parents of disappeared persons and is headed by great and courageous sister Parveena Anger. They have played a great role in freedom movement. History will write the name of these women in golden letters, those who play an equal role in the freedom struggle and Azadi movement. Our sisters are imprisoned. They are in different Indian jails without their babies. At home, they are not safe, but they are determined for their rights and freedom. Indian forces want to break down this important pillar, will of women. In the history of Kashmir independence movement, women have done a remarkable job, which is an example for everyone. When I was researching about the women who contributed to the freedom movement, I gathered a lot of information about her role in different as a social and political activist.
The most difficult task was chosen by them to raise their voices, to support their brothers, to help their families, and to collect information and to document it. All this is done by these women without knowing the result of their activities. She has proved that her strength and struggle and her presence is the backbone of ongoing movement. She was suppressed, humiliated, and also interrogated by forces in different times. Asya Indrabi, the brave women, never compromised. For her mission, and even left her young children behind and worked day and night for her just cause. She is the shining star, motivation, inspiration, and role model for her nation. She organized and led protests in different parts of Kashmir Valley. The Kashmiris are proud of its great daughters. खतीजा बानो, मुझे बताया गया था खवातीन के बारे में, फियर एंड हेल्पलेसनेस। क्योंकि मैं खुद मकबूजा कश्मीर से हूं तो मैं नहीं चाहती हूं कि हम वो चीजें लेके आए पाकिस्तानी आवाम के लिए जहां हम रोए, जहां हम ये कहे कि हम बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। नहीं, हम एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़, ताकतवर, मॉरली और गैरतमंद कौम है जिन्होंने हिंदुस्तान को चैलेंज किया। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने शाइनिंग स्टार्स की, उन खवातीन की बात करूंगी जिन्होंने इस वक्त मोमेंट को जिंदा रखा है। 30 साल के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना टफ टाइम दिया है, जिन कश्मीरी के पास न वेपन है, न फौज है, न उनके पास कोई रास्ता पीछे जाने का नहीं है। बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना है अफगानिस्तान जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अफगानिस्तान के अवाम ने अमेरिका को हराया है। मैं एक सवाल करती हूँ, आप हमें भी सिर्फ उसका 1/3 वेपन दे दे, एक छोटा सा सेफ जोन दे दे, फिर मैं आपको दिखाऊं मेरी कौम की बेटियां, नौजवानों को छोड़िए, मर्दों को छोड़िए, इन्होंने सिर्फ 500 गन आज तक चलाए होंगे। फ्रीडम फाइटर्स लाखों में नहीं है कश्मीर में, मुश्किल रास्ते थे आजाद कश्मीर से वहां तक आना, लेकिन जो उन्होंने अंदर काम किया वो उनकी खवातीन ने संभाला है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। Khatija Bano, she was strong, brave, and dedicated to her cause. Indian Army martyred her in the early 90s when she informed Kashmiri freedom fighters not to cross the river Jahlim, and during saving the injured youth and helping them to save their life. She was warned by the Indian Army to stop leading the mob, but she did not care and got 30 bullets on her body and was the first lady who was directly hit by Indian Army, and she left 3 children, including 5-year-old son. These children lost their brave father too. Masrat Zahra, a Kashmiri photojournalist, said, "I have been targeted because of my identity as a woman, and also because of my work, which focuses on the brutalities of faced by women and children in Kashmir. If I will go back to Kashmir, I feel the Indian government may not allow me to leave the country again." Asya Jilani, a human rights activist who did not remain silent, and she became the strong voice for women's safety and rights. She was very serious to do something for people and use journalism as her weapon. A known and famous name in Kashmir lost her life at a very early age during a covert attack on Kashmiri Mujahideen by the Indian occupational forces. Amina Bano, a very strong woman, said to her husband, and when she told me that I told her husband, my husband, I quote, "We cannot tell anybody to participate in this freedom struggle till we could not do it ourselves. Don't tell anybody to join this movement. Tell your son to join first and everybody will follow you." Her home was raided every day by occupational forces. Her daughter-in-law got fractured during pregnancy when the army raided their houses, tortured everyone, burned the Patan area. She was a courageous woman who was directly involved in this freedom movement
guiding the people to move from one place to another, and watching and monitoring routes during their movement, carrying their day-to-day accessories from one place to another. Tabassum Guru, wife of Shaheed Afzal Guru, when she was asked about the letter written by Shaheed Afzal Guru, she said there was nothing for his family. It was a letter written for a nation. Be proud of my fate. This is her self-determination and message to every Kashmiri who believes in their rights. This is loud and clear message to all. She is a proud daughter, dedicated wife, and a great mother who is carrying all burdens without any grievance. As for a baby whose innocence was ravaged, her case is totally different. And the plan of Indian occupational forces, the program to change the demography, they kidnapped Asfa, they raped Asfa, she was only 8 years old, and then they killed her in the temple. Isha Mushtaq got title Bloom of Dead Eyes. She was hit at home by Indian Army, and her mother says, without eyes, I will show India that she will carry out her education. She is a bright child star. Zamrud Habib, prisoner number 100. We salute our women leadership. They produce literature in Indian jail. Zamrud Habib lost her dear ones when she was in famous Tihar jail, but Indian repression and life in jail made her more strong and committed. I believe in the wisdom of the people of Jammu and Kashmir, in a sphere of different shades of opinions, diversion of strategies, moderators and hardliners. They have sent a categorical message to the world, and their movement is homegrown and indigenous, and their goal is freedom. I will inform you that we have half widows in thousands. According to Anjana Chatterjee, there are more than 8,000. They are waiting for international support, but there is no international support. Only in June 22, in 22, we have more than 42 civilian casualties in Kashmir, and more than 200 those civilians who were arrested, booked under Public Safety Act. A question was raised here about Azad Jammu and Kashmir. I, in my different programs, just want to explain to you 3 things are very important to be done by Foreign Office, by Kashmir Committee, and by Azad Jammu and Kashmir. Number 1, explore Jammu and Kashmir. जब तक आजाद जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया के सामने आप नहीं खोलेंगे, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट मीडिया इतना ज्यादा बायस्ड है कि वो कश्मीर में अपनी तरक्की भी नहीं इसलिए दिखाते हैं कि वहां पर वो जो सड़कें बना रहे हैं, वहां पर जो डैम्स बना रहे हैं, वहां पर जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, कश्मीरियों को लालच दे रहे हैं, और वो वहां से जो बाहर से नॉन कश्मीरीज आएंगे, हिंदूज आएंगे, उनके बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, वो भी उनको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर का वो चैप्टर की जो आगे दूसरा हिस्सा होता है, जहां किलिंग्स होती हैं, जहां फायरिंग होती है, जहां खवातीन डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। पोस्ट 5 अगस्त के बाद आप देखिएगा खवातीन डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, मर्दों को आगे आने की इजाजत नहीं है। दूसरा है कश्मीर के वोट को, जिसको डायस्पोरा कहा जाता है, जिसके बारे में चेयरमैन खुद कह गए कि वो भूल रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, हम आजाद कश्मीर के हैं या पाकिस्तान के हैं। हमारे तकरीबन 8 लाख लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और आजाद कश्मीर के लाखों लोग दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर हैं। उस वोट को रजिस्टर करना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान कश्मीर में हिंदुओं को बसा रहा है तो आपको अपने वोट बैंक को संभालना है। ये एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नए चंद सालों में हिंदुस्तान कहेगा आइए रेफरेंडम करते हैं, उसके लिए तैयारी बहुत
और तीसरी सबसे अहम बात है, हम आपसे मायूस नहीं हैं। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें पाकिस्तान में मायूसी नहीं फैलानी है, मैं मायूसी नहीं फैलाती हूँ, इसलिए कि जब हमने ये पंगा लिया था, हमें मालूम था हम एक बहुत बड़े हाथी के सामने जा रहे हैं, जिसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, जिसकी 1 से 1.5 अरब आबादी है, और जो दुनिया का और रीजन का सुपर पावर कहलाता है। पिछले 32 साल में सिर्फ एक सवाल है, यहाँ लोग मेरे बच्चे बैठे हैं, ये लिखें कि इस कौम ने 32 साल से उनको रोक के रखा है। हम आपकी डिफेंस लाइन है और मजबूत डिफेंस लाइन है, आप हमें मॉरल सपोर्ट दीजिए, वो बहुत जरूरी है। कौमों को हथियारों की जरूरत हर वक्त नहीं होती है, रास्ते मुश्किल है, हमें मालूम है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हथियार, बॉर्डर बंद है। लेकिन एक बार सोचिए, ये कश्मीरी जो लड़ता है जाता कहाँ है, अपने घर जाता है, अपनी माँ को कहता है कि मैंने आज फलानी जगह एनकाउंटर किया, मुझे छुपने की जगह दे, वो बहन के घर जाता है, वो हमसाइन के घर जाता है, दूसरे दिन उस घर को जलाया जाता है। आपकी 12 बेटियां और बहनें हिंदुस्तान के जेलों में इस वक्त कैद है। पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा आसिया इंद्राबी, नाहिद नसरीन, फरीदा के अलावा आपकी इनोसेंट बहनें जिनके बच्चे इस मोमेंट में है, वो हिंदुस्तान के जेलों में बंद है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। तो ये गैरत का सवाल है। आपने कश्मीरी की मदद, उनकी मॉरल को, उनके जज्बात की कदर करते हुए अपने यंग जनरेशन को आपने बताना है कि जब एक कौम ने पिछले 32 साल से बगैर हथियार के एक बड़ी पावर को, इस रीजन को रोके रखा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है। यहाँ मीडिया पर आपने इस चीज को हर बार बावर कराना है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। आपने कल 2 दिन पहले सुना होगा, बड़गाम में और पुलवामा में अटैक हुआ है, इनोसेंट है, उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जो एक जज्बे हुर्रियत के तहत वो बच्चे उठाते हैं गन, जो शायद उनसे उठता भी नहीं है, वजन में भारी होगा, या उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो चला भी सकें। जिस घर में छुपे थे उसमें 14 साल का बच्चा था, उस 14 साल के बच्चे को बार बार कहा गया बाहर आ जाओ, वो नहीं आया। कहते मैं इनको कैसे अकेला छोड़ूं? तो फिर आप हमें कैसे अकेले छोड़ सकते? जब हम आपकी डिफेंस लाइन है, जब मेरा 14 साल का बच्चा कहता है कि मैं अपने मुजाहिदीन को नहीं अकेला छोड़ सकता हूं, तो हमें इंशाल्लाह यकीन है कि आप हमारे पीछे खड़े हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साहब की, और आप इस डिफेंस लाइन की हिफाजत करना जानते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you, Ms. Shamim Shawl, for your very valuable contribution. It is true that history has seen such times where crime was committed by a movement, but the centuries has suffered through it. Now, I would like to hand over the stage to Ambassador Nadeem Riaz. You all can direct your question to him and he will moderate it. Thank you. Thank you, Larib. We are running short of time. We have 10 minutes. So kindly identify yourself if you want to ask a question, and please be very brief and direct your question towards one of the panelists. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, साजिद हुसैन मलिक। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल जो है उसका लीगल एडवाइज़र 3 साल रहा हूँ। सारी डिबेट, कई सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, मेहनत बड़ी करते हैं, प्रोपोगेशन भी बड़ी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट फिर नीचे 0 आ जाता है। प्रैक्टिकली मेरे ख्याल के मुताबिक हम लोग खुद फेथफुल नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरी एक ख्वाहिश है, आज़ाद कश्मीर में एक सियासी जलसा हो, उसमें पूरी पाकिस्तान की हस्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार उसमें शामिल हो, और वो एक जलसा एक तरफ और 5 फरवरी की यकजहती जो हमारी है वो एक तरफ होगी। तो इसमें हर्डल्स क्या है, मतलब इसमें आपस में हम क्यों नहीं इकट्ठे? दूसरी बात ये करनी थी कि जितने क्राइम्स हुए हैं ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो ये क्यों नहीं ले जाते इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में?
اور कम अज कम और कुछ नहीं, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग तो ले जा सकते हैं, अगर अगर पाकिस्तान नहीं ले जा सकता या कोई कानूनी उसमें प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल किसकी तरफ डायरेक्टेड है? अच्छा चले मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया और बहुत अहम सवाल। मैंने अपनी तकरीर में आपको यहाँ पर बताया था कि 2016 में जो किताब, बल्कि उससे कुछ पहले ही जो तैयार की गई थी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लीगल एक्टिविस्ट्स हैं, और वो शेयर की थी यहाँ पर हुकूमत के साथ और बाकी इंटरनेशनल फोरा में भी। मामला कुछ यूं है कि एटलीस्ट जितना हमारा इंटरेक्शन है यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुकूमत के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है कश्मीरियों को कि ICJ में केस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस उस वक्त जाएगा जब दोनों जो मुल्क हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो पाकिस्तान अकेले उसको नहीं लेकर जा सकता। यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट की बात होती है, वहां पर देयर इज सम एप्रीहेंशन ऑन दिस साइड, जिसका कि हम मेरे ख्याल में जी वो भी है ना बताना जी। सो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, तो उन दोनों क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया या ICC हो गया, वहां पर केस लाने में अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वहां पर मुल्क जाते हैं। इसीलिए आपसे जो शेयर किया गया एम्बेसडर साहब ने भी, और उसके बाद भी उस पर बात हुई कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन जिन ममालिक में है वहां पर जाकर हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ अब वो केसेस फाइल करें जो कि रजिस्टर्ड हैं इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पुलिस स्टेशन एंड विच आर इन देयर कोर्ट्स, क्योंकि इसका एविडेंस है। अच्छा, और कोई भी केस उस वक्त तक फाइल नहीं हो सकता जब तक कि वो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो राजी नहीं होते। तो इसलिए जो ये जो केस है ये कैसे कामयाबी से फाइल हो सका, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स AJK में रहते हैं, उनको हरास किया जा रहा है लेकिन हिफाजत में है AJK में, एटलीस्ट उनको पता है कि वो अपने लोगों में है तो ये कर पाए हैं। इसी तरह से एक और केस जो है जो अभी जो हमारे सिविल एक्टिविस्ट हैं पार के उन्तु साहब, उनको हर कुछ अरसे में जो है हिंदुस्तान की फौज पकड़ लेती है, वहां पर उनको थाने में बंद कर लिया जाता है और उनकी अगर आप तस्वीर देखें तो बहुत बहुत ही बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। दैट ब्रेव सोल इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, और उसने कहा कि मेरा भी केस आप लोग फाइल कीजिए, और वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और उनकी इसके बाद आप समझ लें कि उनकी जान खतरे में नहीं, ही इज नाउ अ टारगेट डिफाइंड, एंड कोई पता नहीं कि कब उनको मार दिया जाए। तो पार के लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि उनकी फैमिलीज खड़ी हो पाएंगी वहां पर रहते हुए, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि हम वो केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो कि हम जिनकी फैमिली AJK में हो, चाहे वो क्या कहते हैं 47 और 80s और 90s में जो फैमिलीज आई हैं जो कि AJK में हैं, या फिर चूंकि वो पाकिस्तान में भी माइग्रेट किए हैं, उन लोगों की केसेस फाइल किए जा सके, बिकॉज पार वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो पॉलिटिकल जलसे का कहा, बहुत अच्छा आइडिया। टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा हो सके तो नथिंग लाइक इट। एक बिल्कुल ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पाकिस्तान में है या AJK में है, दे आर ऑन वन पेज। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिफरेंस हुआ हो कि नहीं जी हमने कश्मीर पर बात नहीं करनी। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन अफोर्ड सच स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर इस तरह से एक पावर शो होता है, एक यूनिटी का शो होता है, तो दैट वुड बी अ ब्यूटिफुल एक्शन। और आई होप कि आपकी जो ये तजवीज़ है इस पर कुछ ना कुछ हो सके। AJK में तो इस तरह से ये होता है, और यहाँ पर भी कि हम लोग असेंबलीज में ये बात करते हैं और यूनिफाइड रेजोल्यूशंस पास होती हैं। पाकिस्तान के भी नेशनल असेंबली में जब कश्मीर पर बात होती है तो यूनिफाइड
ریزولوشن پاس ہوتی ہے, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا, ساری پارٹیز مل کر اس کو اپروو کرتی ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از بینگ ڈن ان ہاؤس. آئی ہوپ کہ جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر وہ کبھی ہو تو وہ بہت ہی اچھا ایکشن ہوگا. اینڈ تھینک یو فار یور سجیشن, اٹ از اے ویری گڈ سجیشن. Ambassador Saab, would you like to add something? Asim, would you like to add something? Assalamu alaikum. This is Hamza. I am a student of international relations, and my question is from Ambassador Asim. سر ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ 2-3 ایئرس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں کشمیر کے حوالے سے آفٹر دا انڈین ایکشن آف 5 فیبروری. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بہت زیادہ ایکٹیونیس شو کی, فارن منسٹر نے بھی اور پاکستانی پوری قوم نے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کووڈ آیا اور ہم سب گھروں میں بیٹھ گئے, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہم سٹنگ ڈک کی طرح اب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی. اور ابھی پرائم منسٹر نے جیسے ڈیسائیڈ کیا کہ سردار مسعود خان صاحب کو امبیسڈر لگایا جائے یو ایس میں, تاکہ وہ کشمیر کاز کو جا کے ہائی لائٹ کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے جانے سے پہلے ہی جو انڈین لابی تھی امریکہ میں وہ ایکٹیو ہو گئی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی لابی زیادہ اسٹرانگ ہے یا ہماری کمزور ہے. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا. اور ای یو میں بھی ہمارے یہاں ہمارے لیے کچھ اتنا بولا نہیں جا رہا. یورپی یونین کے اندر بھی جب ہم ای یو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہماری باتیں صرف سنتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ایکشنیبل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو سر اس کے اوپر کائنڈلی آپ ذرا روشنی ڈالیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو انڈینس کا کام ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو بیسکلی آپ نے جو ایک اس کو چیز کو لنک کیا ہے ان اے سینس ہمارے نئے امبیسڈر کی نامزدگی کے ساتھ, اس کے اوپر ہم نے ویسے کل ایک اسٹیٹمنٹ بھی کر دیا, آپ نے وہ دیکھا ہوگا. So basically, they are trying to, use propaganda and disinformation to create doubts, but there is nothing of that sort. Please rest assured. اور ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ وہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے. جب آپ امبیسڈر نامنیٹ کرتے ہیں تو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ایگریما کہتے ہیں, ایگریما دیتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ایک پروسیس کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. دے آر ڈوئنگ دیٹ پروسیس, اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جہاں تک آپ کا ایک اوور آل جو کوشچن ہے, میرا خیال ہے وہ پہلا سوال بھی, اس کا جو پہلا جملہ تھا وہ دیٹ واز نیگیٹنگ انٹائرلی واٹ شہریار آفریدی صاحب واز سیئنگ, اینڈ میدام نے بھی کہا کہ ہم نے خود مایوسی نہیں پھیلانی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے 2 گھنٹے کچھ بات چیت کی, اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی گئی, میڈیا سے ریکویسٹ کی گئی آپ کشمیر کو اور کشمیریوں کو شو کیس کریں. ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں بتایا گیا کہ کس طرح ڈیموگرافک چینجز کی جا رہی ہیں, ہمیں کس طرح اس کو اجاگر کرنا ہے, کس طرح پھیلانا ہے, اپنے لوگوں کو بتانا ہے, دوسرے لوگوں کو بتانا ہے. لیکن اگر اس کے اینڈ میں ہم یہ کہیں کہ جی اینڈ ریزلٹ 0 ہے, سو آئی تھنک آئی وڈ ریسپیکٹفلی بیگ ٹو ڈیفر ود دس اپروچ. اور یہ تمام ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ ہیں, ہم ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل لیڈرز کیا کر سکتے ہیں, میڈم نے اس کا جواب دیا آلریڈی. میں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ کشمیر تو وہ ایشو ہے جس کے اوپر ایک ٹوٹل کنسنسس ہے پوری قوم کا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. کوئی یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں اس سے الگ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اور یہ دس از نیچرل کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ یہ ہمیشہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ کہ ایک قسم کا پازیٹیو پریشر ہو کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ کریں. اور آئی تھنک وی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. آپ کا جو ایک کوشچن تھا, اٹس ناٹ دیٹ کووڈ آیا تو ہم اس کو میرا خیال ہے کہ ہم بیٹھ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر جس طریقے سے جو ایکسپوز کیا گیا ہے انڈینس کو, بی جے پی آر ایس ایس کی پالیسیز کو, آپ ہماری پریس اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ہماری بریفنگس دیکھیں, پرائم منسٹر فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, او آئی سی کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان کی
रेजोल्यूशंस देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक बड़े मौसर तरीके से उसको एक्सपोज किया गया, उसके रिजल्ट सामने आए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको नोट किया है और ये बात मेरा ख्याल है इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि हम अपना पैगाम जो है मौसर तरीके से नहीं पहुंचा सके। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि हमें इससे भी मजीद करना है। आई थिंक ये आज की सारी डिस्कशन का खुलासा भी यही था कि जी वी नीड टू स्टेप अप फर्दर आवर एफर्ट्स एंड आई थिंक ये एक दिस इज द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इसमें। और ये बिल्कुल सही कहा मैडम ने, आप देखें अभी भी आप देख लीजिएगा कि 5 फरवरी और उससे पहले और उसके बाद हमारा मीडिया उनका कितना फोकस है इसके ऊपर, कितना टाइम एलोकेट करते हैं टॉक शोज पे। हमारे जो लीडिंग राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनमें से कितनी परसेंटेज आप ये देखें कि वो कश्मीर के ऊपर कोई ऑपेड या आर्टिकल लिखते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग टू 1 और 2 इंस्टीट्यूशंस कि अब ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस या हमारे पुराने जो एम्बेसडर्स, जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के ऊपर कुछ लिखेंगे। ये तमाम लोगों को लिखना है जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं इस मुल्क में, उन सबको ये इसमें अपना हिस्सा डालना है। Yes, Raza. Last question. I'd like to just point out that Farzana as well, no one other than Foreign Office and the government of Pakistan has done more for the Kashmir cause than PTV network itself. She raised the point about media. The private channels may be interested in giving space to the politicians day in, day out. You watch them. We are also angry at the way they are. He said this, she said this, but we are the ones. Every day there is something on Kashmir, either on PTV News, on PTV World, and all our channels. So as our conscience is clear as media professionals that the amount of work we do for the Kashmir cause. So we can't be blamed. The private states, these private so-called states and the running these channels, they need to be made to realize that they need to give more space to the Kashmir cause in their channels. Our conscience is very clear. We have done it and we will keep on doing that. Ambassador Jamal. My questions for Ambassador Assam. 3 days ago, Indian Union Minister of State gave a statement that under Modi's command by 2024, Pakistani occupied Kashmir would be taken. I would like to have your take on that, if we have issued any statement on that. And part of the other question is, ma'am, what you have been telling is creating a perception that it is not possible to report from the illegally occupied Indian Kashmir on human rights violations. Now, for example, the Human Rights Council's procedures have a confidentiality procedure in which local remedies have to be completed. And after that, individuals and NGOs can report. These NGOs can be international NGOs, these NGOs can be the NGOs based in Indian occupied Kashmir, and these can be even sponsored by APHC. But it has to be sponsored from there. For example, I give you an example. Like you talked about a booklet which had recorded cases. Now there has been so many disappearances, so many bodies. There is a first-hand account on all these things. These can be highlighted by the NGOs so that India has to respond in the Human Rights Council. Sir, you talked about few things, Dr. Vaid, and very good data that you give. Would you recommend some book where we can read little more? Because you brought some very pertinent points. Thank you. Thank you, sir. Sir, on your first question, yes, we responded to it yesterday. We issued a detailed rejoinder to that.
اور اٹس اے کمپلیٹلی پریپوسٹرس اسٹیٹمنٹ. اور ہم نے اپنے اس میں بیان میں کہا کہ یہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے بی جے پی RSS اس قسم کی اسٹیٹمنٹس کو یوز کرتی ہیں, بٹ وی ہیو ریمائنڈیڈ دیم آف دا UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنس, اور یہ کہ دے شوڈ بی ریڈی فار اکاؤنٹیبلٹی. میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے, اور یہ دس از اگین پارٹ آف دی وائڈر ڈسکشن, فارن آفس نے تو اس کا جواب دے دیا, اور اس کو APP نے بھی کور کیا, اس کو PTV نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیا, ایون پرائیویٹ میڈیا نے بھی کیا. But it should be a kind of spontaneous response, from the society, from opinion makers, جو important لوگ ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں, ان کو اس سے بلکہ اس سے بھی پہلے کہ فارن آفس اس کا جواب دے, ایک مؤثر کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اس کے اوپر ریئیکشنز آنے چاہیے. دیٹ ول شو کہ کتنی وائٹیلٹی ہے ہماری سول سوسائٹی میں, کہ ہم اس قسم کے بیانات کو کتنی جلدی جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میڈم سے سوال پوچھا کہ NGOs کیسے کریں گے, مقبوضہ نہیں کر پاتی ہے. آسٹن کی تھیوری ہے انٹرنیشنل لا میں کہ یہ جو پاور ہوتا ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا اسپرنگلر کی, تو وہ اپنی ٹیریٹری میں, سورن ٹیریٹری میں کچھ بھی کر سکتی. فار ایگزامپل مقبوضہ کشمیر میں جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس پہ کام کیا ہے وہ کولیشن آف سول سوسائٹیز نے کیا, اور اس کا وہ میرا دوست بھی ہے خرم, وہ پچھلے 6 مہینے سے بند ہے, حالانکہ وہ یونائٹڈ نیشن ایکریڈیٹڈ بندہ ہے. نمبر جس طرح میم نے آپ کو کہا آسن انتو, اس کی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, جو بھی وہاں کیس کرتا ہے اس کو وہاں کرنے ہی نہیں دیتے. اور تیسرا سر, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آفس انہوں نے دلی میں بند کر دیا, اور اٹ از وائی کہ جب انہوں نے کام کیا تو پھر مقبوض آزاد کشمیر کا ایک کیس جو پار گیا تھا, جو جونی ویلی تھا, جن کی فیملی سیف تھی, تو وہ کیس سٹاک نے پٹ کیا. تو کانفلکٹ ایریاز میں سر بہت سارے کمپلشنز ہوتے ہیں. دوسری بات سر, یہ جو سر ندیم بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہ ڈیموکریٹک پیپر میں کہتا ہوں کہ یہ ڈبل پی ریویو پبلیکیشن میں چھپیں, تو میں اس پہ انشاءاللہ جو ویلیڈیٹڈ ڈیٹا ہو اور جس کو میں کرٹیک پہ بھی ڈالتا ہوں, ریویورز کو دیکھیں بھی, یہ انشاءاللہ سر میں پبلش کروں گا. تیسری بات سر, وہ اس نوجوان کو بات دینی ضروری ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو آپ کو اسی ڈیٹا سے جواب ملے گا جو انڈیا والے خود کہتے ہیں. مثلا وی پی ملک نے کتاب لکھی فرام سرپرائز ٹو وکٹری. وی پی ملک اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھا انڈیا کے جب کارگل کا وار ہوا. وہ سب پیج نمبر 158 پہ لکھتا ہے, ہم نے کارگل میں 1:8 سے جو کچھ حاصل کیا, ریشو 1:8 تھا. ایک پاکستانی فوجی ہم نے اس میں انڈکٹ کیا 8, 1:4. بٹ I recommend to government of India, we must maintain ratio of 1:9. These are words of the VP Malik. یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہمیں کوانٹیٹیو سائڈ ہے کہ ہماری ولر, ہماری سیکورٹی فورسز اور پاکستان کا جو اوورال امیج ہے, وہ اس کو انڈیا کس طرح دیکھتا ہے. اور 3 کتابیں سر انڈیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ایک یہ, دوسرا واجپائی ویئرس سابقہ راج چیف نے لکھی ہے, اجیت دوول نے, اور تیسرا این اینڈنگ وارز بائی ایکس راج چیف RN سود. یہ 3 کتابیں اگر آپ, یہ ساری نئی کتابیں ہیں, ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انڈین مائنڈ سیٹ کا سمجھ آ جائے گا, اس کا آپ کو پاکستان کی اسٹرینگتھ کا بھی پتہ چلے گا انڈین نیریٹیوز میں. اور جب آپ سر ڈیموگرافک ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک ہے وشفل تھنکنگ. مثلا ہم سب, آپ سب, پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کے سیکورٹی ادارے, ہم سب کی وش ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے. ہم سب کی تڑپ ہے, درد ہے کہ وہ بلیڈ ہو جائے. لیکن پرابلم ہے کیپیسٹی کی. مطلب جس طرح سر نے کہا کیپیسٹی, اگر آپ تھنک ٹینکس میں ہے تو میں کیسے کمپیئر کروں ان انٹرنیشنل اسکالرس کو جن کے فنگرز پلس پہ ہے انٹرنیشنل آرڈر کی, تو اس میں مجھے سپیس کتنی ہے. ہم اکثر میں سر تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے, اس سپیس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس سپیس میں کیپیسٹی بلڈنگ بڑی اہم ہے. اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ یوتھ لیول پہ, وہ کیپیسٹی بلڈنگ میڈیا لیول پہ, انٹرنیشنل جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس لیول پہ,
اور باقی جو ہماری لابنگ کا میکنزم ہے, اور لابنگ کا میکنزم جس طرح انہوں نے ICG کا پوچھا, تو اس میں سر سیدھا سیدھا پیسے خرچ ہوتے ہیں. کیا آپ نے $1 بلین دینا ہے تو آپ کا کیس پٹ اپ آگے ہو جائے گا. تو اس میں پھر آپ نے وہ سارے ایک ملٹی ڈائمینشنلی وہ ساری چیزوں کو یکجا کرنا پڑتا ہے, تو کوئی پھر آگے چیز پش کرنی پڑتی ہے. تھینک یو سر. Jamal, we are running short of time, so. سر ICG کے بارے میں Jamal, we can. سر کمپلین پروسیجرز میں آپ نے جو پریما فیشیا ایویڈنس ہے اس کو تو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مثلا میں وکٹم ہوں, مقبوضہ کشمیر میں ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرے پاس انڈین آرمی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں انڈین آرمی میں کے خلاف؟ ظاہر ہے آرمی ہی تو میری گھر آئی تھی جنہوں نے میرا نقصان کیا. اور پھر مجھے جب میں وہ کمپلین درج کروں گا UN میکنزم کے محت وہ جو کنٹینٹ ہے اس کو وہ پھر جو ہے وہ پروو کرتے ہیں کہ کیا یہ کنٹینٹ واقعی ہے پرائمری سورسز سے اور کیا یہ وکٹم سے ہیں. اب دیکھیں سر میرے پاس بک ہے, میں سر آپ کو دے دوں گا, ٹارچر اور وائلنس سب سٹرکچر, میری گاڑی میں مٹی سی بکس ہے, میں آپ کو ابھی سر دے دوں گا. اس میں جو ہماری کیس سٹڈیز ہے وہ ساری پرائمری ڈیٹا پہ منحصر ہے. لیکن جب میں ہیومن رائٹس تھرو ایکوساک ہیومن رائٹس کمیشن میں جاتا ہوں, جب میں ایک کیس پٹ اپ کرتا ہوں, وائی سر وہ ایک ہی کیس پٹ اپ کرنا ہے, لیکن اس کے خلاف جس کے جو بیچارہ وکٹم تھا اس کو انڈین ایریا میں کون پروٹیکشن دے گا. یہ سب سے بڑا ایک ہوتا ہے نا سر تھیوریٹیکل, لیکن پریکٹیکلی انڈیا انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. جب وہ انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا, جب وہ جو سر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کام کرنے نہیں دیتا, جب وہ ایون UN MOIP یہ جو ملٹری آبزرورز گروپ ہے ان کو بھی انہوں نے کہا بلڈنگز خالی کر دو, تو سر وہ انٹرنل سورن میں وہ انٹرنیشنل لا کو اوبے نہیں کرتا. اسی لیے یہاں ہم کہتے ہیں کہ جب ہیجمون کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ پھر سب سے بڑی کیجویلٹی لا ہوتا ہے, انٹرنیشنل لا کیجویلٹی ہوتا ہے. We can carry the discussion at lunch because we are really going over time. Ambassador Jamal, we can carry the discussion over lunch. We are really going over time. Trust me, if it was possible, it would have been done. If it is not being done, there's a reason. And when we say that our people are in danger and they cannot, then they cannot. First, we'll have to bring them over here, and only then. So it is very difficult. اور وہ جو احسن انتو, a brave man, وہ اپنا کیس جو ہے اس نے کہا ہے, اس کی ایکسیپٹنس ہوئی ہے تو ہی لے کر گیا. I just want to share a small piece of information کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ایک اسٹڈی جو ہے شیئر کی ہے with the public, جس میں کہ ڈس انفو لیب کے نام سے, ٹھیک ہے جی. So what they've done is کہ they've created a fake ID. EU والا جو ڈس انفو لیب تھا وہ نام استعمال کر کے انہوں نے جو کشمیری کام کر رہے ہیں اس کو مسلم بردرہڈ کے ساتھ ٹیگ کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ فرام ون پوائنٹ آف ویو آئی فائنڈ دس ویری انٹرسٹنگ اینڈ a kind of a success for the Kashmiri people who've been insisting and saying that one, war is going on in Kashmir, two, war crimes are happening, and three, that there is a case now in a universal jurisdiction exercising country that has shaken India so much کہ انہوں نے 100 پیج کی ایک لمبی رپورٹ نکالی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے فائز صاحب کا ذکر کیا ہوا ہے, فرحان مجاہد چک ہیں, یہ لیگل فورم فار کشمیر جو کہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے تاکہ پھر کیسز فائل ہوں, اس کی چیئرمین. So here are small successes کہ ایک کیس نے انڈیا کو کتنا شیک کر دیا ہے, اور وہ کتنا رو رہا ہے, وہ UN کو خط لکھ رہا ہے کہ جی دس از رانگ, اس معاملے پر یونیورسل جورسڈکشن چلتی نہیں ہے. ایک کیس پر انڈیا کا یہ حال ہے. تو اس طرح کے اور بھی کیسز آئیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ انڈیا کا کیا حال ہوگا.
These cases have to be filed by the people of Kashmir to represent Kashmir. This cannot be done by anyone. Why? Because people of the conflict, we have the right to fight back. We have the right to protect ourselves and our loved ones. And so we are well placed and the best to represent ourselves. What we ask is to always be the lawyer that you have been. This country is the lawyer for Kashmir, and it remains strong, it remains persistent and consistent, because the Kashmiri people are rising in all different manners and they're doing it. Last is my request is कि जी हमारे अमूमन जो आर्टिकल्स इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छपते हैं वो हमारे पार के कश्मीरी बहुत आला आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं. हम अपने एजेके में भी कोशिश कर रहे हैं और आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कश्मीर पर लिखें और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आपके आर्टिकल्स छपने चाहिए. वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो न्यू, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, ऐसे ऐसे अखबारों में छपें. The content needs to be created and it needs to be exceptional for it to make space. जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि जहां पर इंडिया का नैरेटिव इतना सक्सेसफुल है, we have to fight back on that level as well. So thank you so much. Thank you very much. That brings us to the end of the seminar. I would like to thank all the panelists for sparing so much of time to be with us.